ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಭವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದ waist level, nicely negotiated by the batter, the left hand batter, and place it down to cow point region. So Fighters Trophy 2023, the inauguration is on. Here is the next one, right arm over the wicket, balls off the back foot, lofted that one, and high and handsome down to deep long on region, one bounce into the fence for 4 runs. Absolutely a fantastic stroke there from the batter off the back foot, plays it down to deep long on. Again he will going to get ready for the next one to face, right arm over the wicket, going for the pull shot, top edge, but ball which is landed safely. Now nicely plays it down to deep mid wicket region for a single with that. Yes, thank you very much. So we're going to continue here. Left arm around the wicket. Ball is just going down the leg stump outside the leg stump. Nicely plays it down to mid wicket. Beautifully driven down to mid wicket region and powerfully struck there by the batter. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. 2023 ಪರವಾಗಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ್ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ SDM ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಗಾಯನ್ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಭರಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನ್ರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್.
ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆತ್ತ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತದೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೈವ್ ಇರುವುದು ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮರು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇರುವುದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಇರುವುದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಫ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು SDM ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ದಿವಸಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ದಿವಸಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಸಚಿನ್, ಶಮಿತ್ ಹಾಗೂ ವೈಶಾಖ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಫ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
everything is ready here for the prestigious Fighters Trophy 2023. After that inaugural ceremony, we're into the inaugural match. And two teams, the very good teams, will go into clash in their first match. Team Trishul versus Thunder Wolves. And after winning the toss, captain of Thunder Wolves selected to field first so that the bowlers will go into start the proceedings from the far end. The left-hand batsman is on strike. Akhilesh, here is the first ball. This time right on the block hole. Nice 21 right in the gap. Down to deep. Wideish long off boundary for 4 runs. Fantastic start here from the batter Akhilesh. This time batsman tried to york the batter. But the batter negotiated very well. Just putting his batter right in time to get the placement right and get the timing behind that one. Absolutely fantastic job. And the placement is so good in that occasion, especially when you're playing in the power play overs. There is no protection has been given in the deep, in the offside region. Here is the second ball, right arm over the wicket. Again, up and over, up and over. This time it's going to be back-to-back boundary. One bounce into the fence. Little margin for error. You can't do the mistake when you're bowling the power play overs. Bowling two juicy full toss delivery and Akhilesh capitalizing that one. Absolutely fantastic cricketing stroke here from Akhilesh. This time he's got a juicy full toss outside the line of off time. There is no ample pace in the ball. At the same time, he didn't got any adequate field for that, and he got a punishment. When you're trying to bowl that one outside the line of off time, if you're not giving any protection in the deep, then I think it's going to be an easy fix for any batter. We're going to enjoy to get the boundary. The back-to-back 2 boundaries here, and with that 2 boundaries, it's going to be a flying start here for Team Trishul. Through Akhilesh, he got back-to-back 2 boundaries. After this match, Team Tulnad Tigers will going to take Team Avishkar, so that it's the first call for both the teams. Kindly request you to complete the formalities of signatures and please get ready for the next match. Third time in this over. Will it going to be a hat-trick boundary? Yes! Oh my goodness! Good! Looks like the ball will going to travel over the head of that fielder, but the fielder in the square leg actually managed very well to go to hand onto that. Otherwise, it's going to be a 3rd boundary. But the fielder almost looks like he hold that one. But unfortunately, have a look at it on a replay. Powerfully driven, pulls that one. And square leg fielder just got a hand onto that. Second attempt, third attempt, he couldn't manage to hold the catch. But he able to stop the boundary for his team. So just a single there. With that single score, moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Guru from the far end. Right arm over. Oh, that was a fantastic one. And it's going to be one more single. There is no signal came from umpire. It might be the ball is got slight a bit of bat onto that. And with that single score, moves on to double figure 10 on the board. So no LBW as far as this particular tournament is concerned, so that no danger of getting out in the form of leg before wicket. So batters quite free here to shuffle across the line of delivery. Even they're going to miss the ball, and then of course they can be survived. This time, oh, what a fantastic work by the wicketkeeper behind the stump. Absolutely electrifying work there from the wicketkeeper. No chance at all for Akhilesh to back. Nikit Kothari behind the stump, absolutely just in a blink of eyes, he completed a job. Just I want to see it in a replay, the way that the wicketkeeper that did the job. Absolutely good work, isn't it? There's no chance at all for the fielder to batsman to get back. Slight a bit of is just outside the crease. And just have a look at it in a replay. Have a look at the work behind the stump. Absolutely, when batsman survives, that just he turns back and seeing that wicket which is uprooted by the wicketkeeper. Absolutely good work. A very good quick work there by the wicketkeeper Nitish Kothari, so that the first wicket is back into pavilion. The danger man departs. Akhilesh, after scoring 9 valuable runs in just 4 deliveries in fact, is back into pavilion. So strike rate of exactly 300 what Akhilesh has got, but I think he's did a job. What the kind of start which is required in the first over, but unfortunately after he got a good start, but fails to convert that start into good innings, big innings. The new batter as a number 3. This time again lovely shot, up and over the top of the infield, down to deep cow point boundary for 4 runs. This is the 3rd boundary, and Jitesh is the batter, the new batsman as a number 3 batter. He came into middle,
Just the intention is very clear that the fall of wicket will not going to change the strategy of the game, that they wanted to go over the first over. They wanted to get as much runs as possible in the first over. The first over completed. After completion of a first over, it's a 14 on the board. 14 for the loss of Akhilesh wicket, and it's going to be a very good start, I want to say. Even though opposition team has got a 1 wicket, but more than the wicket, I think sometime in this format of the games, it's always noticeable that how many runs you scored in that over. And they got 14 runs, means it's going to be a good start. But very difficult to say anything about the cricket, the small format of the games, especially when you are seeing that the ball which is used for this particular tournament, the training, which is the tennis ball, hard tennis ball, which is used for this tournament, and I think it's going to be a very comfortable for the batters, because ball which is coming very nicely to the bat. So number 7 bowler is introduced. First ball, full toss, lofted handsomely, and he got the distance as well. Ball is travelled out of the park for a 6. Sajan this time joining the party, isn't it? He got a juicy full toss from the bowler Srijit, and he dispatches that one down to deep, between deep square, like in front of square, in front of square, and ball is travelled out of the park. I already mentioned the little margin for error. You can't do the mistakes when you are bowling with the training balls, which is very hard in the nature. And I think it's going to be always going to be asking for trouble. You're bowling a full toss delivery again. That was outside the run-back stamp, and the batsman going for the drive. White call by umpire. Little margin for error. It's going to be a couple of runs being scored here. The runs are coming very freely for team Trishul against Thunderwolves, and score now moves on to 22 on the board. Already the 22 runs on the board. That shows that this is definitely going to be a batting paradise. And I think it's going to be a lot of hard work required for the bowler. This time went for the switch it, missed it completely. Then always is going to be a one of the popular stroke in a present cricket is concerned. The modern cricket is concerned. Each and every batter loves to play the switch it, but this time he missed the line completely. Nothing wrong with that. The intention of the batsman, because there is no fielder in the backward point and third man, so he wanted to get that one into that area, but he missed it completely. Right arm over the wicket. Oh, this is going to be a full toss where umpire can call it's a no ball. It's above the waist level, so that is definitely is a no ball. A right call from umpire. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery. Sajan has got opportunity to play that free hit delivery, and wait and see how he will going to capitalize and how Srijit will going to survive. This time top edge, but a top edge which is the ball which is carried to the fielder, but as a fact that it's a free hit delivery, no question of getting a wicket here. So batsman survives. So scoreboard moves on to 25. Quarter century comes up very quickly in just 9 deliveries. Srijit balls, drives that one up and over again. The fielder is there in the short extra cover region. Tried his level best to take that one, but ball is just going over the top of that fielder. But protection has been given in the deep in the extra cover region, so that the batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard numbers on to 26. Srijit again, right arm over the wicket, bounce. This time again a top edge opportunity. This is going to be a one more opportunity missed out by the fielder. Quite unusual, isn't it? Unfortunate as well. The same fielder taken a catch for the free hit delivery, but here is opportunity where there is a fair delivery. He misses the catch, and batsman survives. So 27 on the board. Last time in this over. Srijit bowls. This time off the backward, plays it down to cover point region. Good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to stop the single from this to batter. And one more productive over which comes in, and they got a lot of runs in this over. After completion of over number 2, it's 28 on the board. That means 14 from the first and 14 from the second. Even after that power play, the strategy of getting a run rate is not really changed here. They're going very well, and 28 in 2 overs. Absolutely, it's going to be a fantastic a fantastic start here for team Trishul.
And lot of hard work needed here from Thunder Wolves. The Thunder Wolves are facing some thunder batting from the opposition team Trishul. Now from the far end, it's going to be a start of the over number 3. Anvit brought into attack. For Anvit, there is a long off. The mid-on fielder going back to deep long on. There is a deep mid-wicket orthodox. There is a deep square leg in front of square. One fielder stationed at between cover point and backward point. This time, again he plays it quite nicely. The placement is so exquisite in the occasion. But just inside the boundary line, the fielder from deep extra cover region managed to field that one very well. And ample time for the batter to complete that couple of runs. And Gitesh got a couple of runs. And scoreboard moves on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. Partnership is now going very well after the loss of a wicket of Akhilesh, who's got a very good start in the first over. Now bowler Anvit, right arm over the wicket. Shuffled across, swings it hard, and he got the distance. Even though there is not that much of proper connection, but it was quite enough. I already mentioned the training ball which is used for this particular tournament is always going to be a little margin for error for the bowler. And even though batsman shuffled across the line of the line, don't think it's going to be going to be a very, very controlled pull shot, but still enough for them to get the distance. That shows this is going to be a batter's paradise. The first day of this cricket tournament, and one more 6, and with that 6, Coburn moves on to 36. Ball which is bent out of the park. So Gitesh is looking so controlled, and Anvit to ball from the far end. Right arm over the wicket bounce. This time going for the switch it. Oh, ball just falling short of the fielder. Ball just came in half volley for the fielder down that short third man region. The intention of the batter to get clear that fielder in field, but he couldn't manage to get that one from middle of the bat. And one more run is added to total now. 37 on the board for the loss of 1 wicket. The bowler Anvit, right arm over the wicket. This time shuffled across the line of the delivery, which defeats the wicket keeper. And I think it's from the bat. No signal from umpire. One more single added to total. With that single, score moves on to 38. The over number 3 is in progress. Anvit again from the far end. Beautifully bowled. Good comeback here by the bowler Anvit. After that he conceded that 6. Then he is just learning from the mistake, and he's bowled some very good line and length. Slight leg cutter, slower one. Is not bowling with a full face, and this is one of the best strategy the bowler to bowl the slower one when ball is coming nicely to the bat. Again, good piece of fielding there by the fielder. One more dotted delivery. Lot of support here for both the teams. The good over from Anvit. First time you are seeing that it's a better over. Compared to last 2 overs, it's going to be a good over. Ball by Anvit. He conceded 10 runs in that over. Altogether, it's a 38 on the board. And after completion of over number 3, it's a 33, 38, 2 overs remaining. So needed another 2 good overs badly for the team Thunder Wolves if they wanted to restrict the opposition less than 60. Any score 60 plus is going to be a good score, but you can't say anything in cricket. Cricket is game of glorious uncertainty. It's an unpredictable game, and it's very difficult to say, especially under this condition. The batting first team, it's very difficult for settle for any score over less than 60. I think it's manageable for the chasing team if they bat well. This time pulls that one. Sajan looks like he's going to get the fielder underneath it. He pulls that one,
but not really control that ball very well. That is because of the extra bounce in that delivery. Couldn't manage to get under that one neatly, and ball went straight to the hands of a deep square leg region. He's just waiting for that one. Second wicket is back into pavilion, and Sanath strikes in his first ball itself. It's a well-directed bouncer, which is little bit high bounce for any batter to pull the ball properly. Not really control that pull shot, and he just pays the penalty for that. Now Sher is a new batter in as a number 4 batter for the side of Team Trishul. Team Trishul at one stage they're really cruising towards a big total after they got 28 runs in 2 overs. Then last over, which is 10 runs, and now Sanath has got a very important breakthrough. This is the right time for Thunderbolts to tighten up the screws here, because whenever the new bats are coming to the middle, I think it's the right time for the fielding team to get some good overs, economical overs. So Sanath again bowling away from us. So now Sher going for the big shot. The chance of caught behind the wicket. Absolutely right. Nikit Kothari is the safest pair of hands behind the stump. No way to miss the opportunity to send Naushir for the golden duck. Back-to-back 2 wickets here for Sanath. That means he's on hat-trick. And the first match itself, the bowler has got opportunity to register the name as a first bowler to get the hat-trick of this prestigious Fighters Trophy, which is proudly organized by Team Real Fighters here in UCG Cricket Ground. Can Sanath able to get the hat-trick here? Santosh is the new batsman in. Santosh, wait and see, can he able to prevent the hat-trick here? But here is a hat-trick delivery, Sanath. Left arm. Round the wicket. Ooh, that ball has got a bat in the last moment. Almost is targeting to hit the stump. But full toss, which is not a low full toss. So slight a bit of opportunity for the batter to dry the ball, but he didn't got enough bat onto that. He got outside edge of the bat. Single taken, and hat-trick which is prevented. Scoreboard now moves on to 39. Sanath, left arm round the wicket, seaming in from the lovely shot. Stand and delivered. Absolutely effortlessly played. Glorious shot there from the batter Gitesh. Just I want to say here, I want to see the replay, the way that batsman transferring his weight onto the back foot and getting some extra. Have a look at that one. Slide a bit of shuffle and stand and delivered. Absolutely fantastic timing behind the stumps. Timing behind that stroke to get the distance. It's a huge 6 ball which is went many miles, and scoreboard jumps into 45 on the board. Sanath. This time switch it comes into play, but the protection has been given for that stroke, so that batsmen have to settle for the single. So with that single, scoreboard now moves on to 46 on the board. 46 for the loss of 2 wickets. Sanath, so far it's a very good over, even though the 6 which is conceded in that over, but being the fact that he picked up 2 valuable wickets in the first 2 deliveries, then altogether he conceded 8 runs, and last deliveries to spare. Santosh is on strike. Bowler is on attack. Sanath just wanted to use his feet, but I think it's a good change of line there by the bowler, and even is intelligent thinking there by Sanath, just bowling the slower one. So very good over completed, excluding that 6 from that over. It's a fantastic over there from Sanath. Picked up 2 wickets for just 8 runs in that over. 4 gone after completion of 4 overs. Searching for the right track. Team Thunderwolves are 46 on the board for the loss of 2 wickets. (46) on the board for the loss of 2 wickets. The last over remaining. I think first 2 overs which belongs to team Trishul, and after that 2 overs bowled by Anvit as well as Sanath. Slight a bit of the better over, in that they conceded 18 runs, but first 2 overs is 28 runs, and another next 2 overs which 18 runs came from that over.
Anvit will go into ball his second and last over of his quota. As per the rules and regulation of this particular cricket tournament is concerned, one bowler can bowl 2 overs. So Anvit been choose as a better bowler, saying that he is considered only 10 runs and he will be asked to bowl that last over. This time full toss, but mistimed stroke there from the batter. Very good catch taken by the fielder down at long off. Of course, he completed the catch down at short extra cover, but he's charging from the deeper extra cover region to complete the catch. The wicket number 3, which is back into pavilion. Trishul lost their 3rd wicket at the score of 4th wicket, in fact, at the score of 46 on the board. Good comeback from Thunderbolts after their quite expensive 2 overs. Then they're able to pick some wickets and we are trying to put some break on the run rate. At one stage, I think the team Trishul are really cruising towards a score around 60 plus, 70 plus even. But the bowlers did a great job here to pull the things back in the favor. But job is not yet over. Still they have to bowl another 5 deliveries and wait and see how well Team Trishul will going to finish their innings with some good score here. The 5 deliveries remaining. Right arm over the wicket. This time batsman wanted to cut that one away from his body. Missed time, but certain single here for the new batter. Dhanush is off the mark with a single and scoreboard now moves on to 47. 4 balls remaining in their innings. Anvit knows that he's dealing with the last over. You need to bowl 1 good over if they wanted to prevent the opposition from the huge score. This time he lofted but not quite controlled stroke. Opportunity catching practice here for the deep long on fielder and he completed the catch very well in the end. Seems to be it is an easy catch, but sometimes it's very difficult one. When batsman hitting the ball very high up in the air, a lot of concentration is required for the fielder to take the catch. But fielder down at deep long on, he's just kept the eye on the ball and completed that catch very well. So 1 more wicket is back into pavilion. 3 balls and 2 wickets taken there by Anvit. The kind of last over which is badly required here for Thunderbolts, and Anvit is really producing that over. The 3 balls which is remaining, job which is not yet over, because in this particular ball you can't say anything. When any small mistake, the batsman will go into enjoy hitting the ball out of the park. Now new batter is come to the middle. Dhanush. The first ball, facing his first ball, but nothing much to do with the delivery. Seeing that ball is going far away outside the line of off stump, he just shouldering his arm, left the ball, rightly so. Umpire, no hesitation to call that wide. 48 on the board. Anvit. Balls again, lovely delivery. First fantastic delivery for the fresh leg. Whenever the new batter coming to the middle, this is a line where you're always going to test the temperament of the batter. Slight a bit of away going delivery. Batsman tried to cut that one. Missed it complete. The wicketkeeper in a fraction completes the job, but fails to get the result in his favor because the back foot of the batter still inside the line. So no question of stump out. And dotted delivery, much required dotted delivery. So far it's been outstanding over. Just a couple of runs conceded so far in 4 deliveries. Now he's bowling 5th time in this over. Avinit balls, drives that one nicely towards the mid wicket, but not more than a single. They're charging for the second. In comes the throw from the deep. Wicketkeeper misses the ball completely from the hands. Wicketkeeper fails to collect the throw from the fielder, isn't it? Slight a bit of urgency. 50 comes up here for Team Trishul. 50 comes up. But we are not seeing that much of excitement in the dugout of Trishul because he knows that they might be seeing more than that in this when they are dealing with the last over. But just 50 came in. That means the first 2 overs which is belongs to Trishul and remaining 3 overs which is belongs to Thunderbolts so far. Last ball remaining. Just 4 runs and 2 wickets in that last over. That means Anvish is justifying the captain's decision why he's been asked to bowl the last over and 2 over of his quota. And he's bowling now last delivery of the innings of Trishul. Beautifully bowled. Perfect Yorker line delivery. Opportunity of run out. Formalities which is missed out by the bowler.
So at last, a single which is conceded in the last delivery of the innings of Trishul. That means that they scored a 51 in the stipulated 5 overs, and they set a target of 52 to win this match. And wait and see how well the team Thunderwolves will going to get this 52 in their stipulated 5 overs. And it's going to be very interesting, isn't it, when they're going to chase these runs. But very difficult to predict over this particular match, I want to say. But I think the last 3 overs, the bowlers of Thunderwolves managed very well to pull the things back in the favor. But they need to bat very well if they wanted to get that 52 runs. So we didn't see the strategy from both the teams to winning this match. And we'll take a short break here in our commentary box. And after the short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much. And good morning, Gopi. Welcome back for the prestigious Fighters Trophy 2023. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्रिकेट लवर्स। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो फाइटर्स ट्रॉफी 2023 का उद्घाटन मैच यहाँ पर इस वक्त प्रगति पर टीम त्रिशूल और टीम थंडरबोल्ट्स के बीच में है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम त्रिशूल ने बनाए 52 रनों का लक्ष्य, 52 द टारगेट फॉर Team Thunderwolves. They have to score with a required run rate of exactly 10.40 runs per over in the stipulated 5 overs. As far as the victory is concerned for Team Thunderwolves, और देखना यह है कि वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और आरंभिक बल्लेबाज गुरु और अतुल इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर क्रीज पर मौजूद और गीतेश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए पारी की पहली गेंद लेकर तैयार। बेहतर स्ट्रोक का खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त कवर पॉइंट पर, क्षेत्र पर फील्डर मौजूद वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम थंडरवुल्व्स के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम थंडरवुल्व्स को, अगर उन्हें 52 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और इस बीच गीतेश बेहतरीन गेंदबाजी का एक्शन उनका, और एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। नॉट ओवर द विकेट और हाई आर्म एक्शन। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट टॉप एज, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। 3 फील्डर दौड़ कर आए थे लेकिन कोई भी फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और फलस्वरूप बल्लेबाज 1 रन न दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान। एक बार फिर से
गितेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद को इस बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े ओवर थ्रो के रूप में और लो फुल टॉस गेंद थी और गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 2 रन बल्लेबाज को जरूर मिला और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है थंडर वुल्व्स को अगर उन्हें 52 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचना है। तो और गितेश अपने बेहतरीन गेंदबाजी की शैली के जरिए अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर और फिर से एक बार गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, नॉट क्वाइट बिट गेट दैट, इनफैक्ट इट्स अ मिसफील्ड और गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट पर और दोबारा खुद वही फील्डर अपने पीछे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, ठीक तरह से मिडल ऑफ द पैड गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन एक बार फिर से 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। टीम तुलना टाइगर्स और टीम आविष्कार के कप्तानों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया टॉस के लिए स्टेज को संपर्क करें, संगठकों को संपर्क करें और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त गितेश एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर और गेंद इस वक्त पहुंची बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल नहीं ली थी और एक्स्ट्रा पेस के साथ इस वक्त गुजरती हुई बल्लेबाज को वंचित करने के बाद और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी एक बार फिर से गितेश इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर खेला, लेकिन मिड विकेट पर नॉन स्ट्राइक करंट पर बैकअप नहीं कर पाए ठीक तरह से गेंदबाज। जब तक वो स्टंप्सों के करीब पहुंचे थ्रो उनके हाथों को पार करके निकल चुकी थी इस वक्त और यहां पर इस मौके पर बल्लेबाज बच चुके हैं और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर ओवर गितेश का यहां पर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 52 रनों के विशाल से लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन जोड़ चुका है यहां पर टीम थंडर वुल्व्स बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस स्कोर्ड बाय टीम थंडर वुल्व्स after the completion of first over and still they have to score 45 more runs for victory in remaining 4 overs and the required run rate is now gone up to exactly 11.25 runs per over। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अखिलेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ टीम थंडर वुल्व्स के बारे में। ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ सेकेंड ओवर स्टार्स इन टीम थंडर वुल्व्स इनिंग्स और गेंदबाज अखिलेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई पहले ओवर की खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर अखिलेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद डाउन साइड पर स्विंग किया लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर. जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपने छोड़ को बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 विदाउट लॉस इन दी एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज अखिलेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गुरु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त. गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप विकेट के दरमियान नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. अतुल्ला इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर
गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। अखिलेश अपने गेंदबाजी के मार्क पर यहाँ पर जाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करने के बाद और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं क्रीज पर और अखिलेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अतुल के लिए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला इनटू द गैप एज वेल। इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट स्ट्रोक। This is an absolutely perfect stroke. गेंद को इस वक्त खेल दिया था with a twisted bat at the last moment. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one with a reverse shot down to a deep extra cover for a boundary. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। It's 14 without loss in the open number second in progress. जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो इस वक्त चंद ऐसे चौकों की सख्त जरूरत इस वक्त टीम थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों को। और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद लगभग उनके पैर पर टकराई और यहाँ पर रनआउट के मौके से भी बच चुके। ऐसा कहना पड़ेगा परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पाए और एक रन बल्लेबाज को मिला। टीम तुलनाडु टाइगर्स after won the toss they elected to field first in the next match against team Avishkar and that match is now coming up loud exclusively right after this match। और जहां तक इस मैच का सवाल है इस वक्त संघर्ष यहां पर जारी है और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त गेंद को उछाला कहना पड़ेगा गेंदबाज की दाईं ओर से लंगोल पर मिस फील्ड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। ओवर थ्रो और तीसरे रन के लिए भी बल्लेबाज यहाँ पर दौड़ पड़े और तीसरा रन पूर्ण कर चुके हैं और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। सो द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और 35 रनों की और दरकार इस वक्त विजय के लिए टीम थंडरबोल्ट्स को और 19 गेंदें उनकी पारी में और फेंके जाने बाकी। और इस बीच गेंदबाज अखिलेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। भीषण गर्मी जो कि इस मैदान पर इस वक्त पड़ती हुई और इस बीच गेंदबाज ये गेंद टॉप एज और इस कैच को लपक लिया विकेट कीपर ने अपने आगे की ओर आते हुए। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई टॉप एज पर गेंद टकराए और एक बेहतर कैच विकेट कीपर ने अपने आगे की ओर दौड़ कर आकर लपका और इसी के साथ विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका। तो अतुल की पारी समाप्त। फर्स्ट विकेट फॉलोन फॉर team Thunderbolts. In fact, they are 17 for the loss of 1 wicket and 2 overs completed in their innings. Exactly 8.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. And still in overall calculation, it's going to be 35 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries with a required run rate of exactly 11.66 runs per over. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त गेंदबाज गीतेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है दर्शन और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गुरु और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई धूप अपना कहर मैदान पर ढाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई। और जहां तक वक्त का सवाल है इस वक्त 11:45 सुबह के बज चुके हैं। सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ और अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। बादल के चंद टुकड़े जरूर नीलाकाश तले इस वक्त दिखाई देते हुए लेकिन वर्षा के बादल नहीं और ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। गीतेश ओवर की पहली गेंद अपने बेहतरीन हाई आर्म एक्शन के जरिए ये गेंद फेंकी जरूर लेकिन गेंद निकली ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड के रूप में और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा
और अपने अपने पेस को वृद्धि करने का प्रयास किया था और इन स्विंगिंग डिलीवरी इस वक्त ज़रूर फेंकी थी, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकली और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, लेकिन टीम को जरूर मिला अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रास के रूप में। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गितेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बैटर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता ऑफ साइड पर विकेट कीपर अपील करते हुए कॉट बिहाइंड का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले का संपर्क यहाँ पर नहीं हुआ, तो अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। और बेहतर गेंद थी इस वक्त गितेश की और इस गेंद पर बल्लेबाज रन नहीं प्राप्त कर पाए। तो हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त उन्हें चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस मैच में अपनी वापसी कमबैक करने के लिए। और गितेश अगली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाती हुई और गेंद वहां पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। It's just hit that one after being getting right from the middle of the bat और गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ गुरु के बल्ले से और इस छक्के के साथ कुछ हद तक रन की गति में वृद्धि यहां पर आती हुई टीम थंडरबोल्ट्स की पारी में। अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से, लेकिन इस बार टॉप एज मौका लॉन्ग ऑफ फील्डर के लिए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। इस बार विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर उसी दिशा में उछालना चाहता, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इट जस्ट नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद टॉप एज पर टकराई और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर दौड़ कर आते हुए एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। तो दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सो नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। अन्वित नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और टीम त्रिशूल के खिलाड़ी इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए और यहां पर नए बल्लेबाज अन्वित का इस वक्त आगमन होता हुआ और दूसरे छोर के बल्लेबाज दर्शन इस वक्त उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। और यहाँ पर गितेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए छक्का प्रदान करने के बाद अगली ही गेंद पर अपना बदला यहाँ पर ले लिया गेंदबाज गितेश ने विकेट प्राप्त करते हुए गुरु का। और कुल मिलाकर 25 रनों पर यहाँ पर दूसरा विकेट गिर चुका, तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अन्वित सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज गितेश, बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए और गितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बैटर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फुल लेंथ गेंद थी। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, नॉट क्वाइट, इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अन्वित के लिए ये गेंद बॉल्ड आउट। इस बार सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल और लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और इसी के साथ यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है अन्वित का और 25 रनों पर तीसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है। टीम थंडरबोल्ट्स इस वक्त काफी हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। They are looking in trouble now, 25 for the loss of 3 wicket and this is the third over in progress। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज गितेश और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ निखित, जो कि इस वक्त
सामना करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज गीतेश की ओवर की अगली गेंद का। तो गीतेश इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है डीप कवर पॉइंट पर। और जहाँ तक सवाल इस वक्त लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मौजूद और कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर इस वक्त मौजूद नहीं। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गीतेश तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंचना चाहता बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर की समाप्ति, बेहतर स्पेल की समाप्ति हो चुकी है गीतेश की 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा टीम Thunderbolts just searching for the right track. 25 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. 27 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. And the asking run rate is now gone up to exactly 13.5 runs per over. 27 रन बचे हुए 2 ओवर यानी 12 गेंदों में इस वक्त बनाने। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज 24/7 चैनल के जरिए। श्रीमान मानिक इनके सारथी में। और जहां तक सवाल है रन्स का, तो 27 रन चाहिए, 27 टू गेट इन रिमेनिंग 2 ओवर्स। और गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए नौशीर और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज दर्शन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर हमसे दूर वाले छोर से नौशीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद पटके हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 26 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 26 रन बन चुके हैं, 26 रन और बनाने हैं और 12 गेंदें कुल मिलाकर उनकी पारी में शेष। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौशीर दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, इस वक्त उछाल लेते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर पुल करना चाहता, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव पड़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों को कमबैक करने के लिए। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 27 रनों पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन गेंद पहुंची सीधे शॉट मिड विकेट पर। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद पर ठीक तरह से जगह नहीं पड़ा पाया इस बार बल्लेबाज। गेंद को खेल तो जरूर दिया, लेकिन गेंद सीधे पहुंची शॉट मिड विकेट फील्डर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक डॉट गेंद और उनके खाते में जुड़ता हुआ एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार कॉट बिहाइंड और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। निखित की पारी समाप्त। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं उनके लिए और बढ़ चुकी है। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 25 टू गेट इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। 25 रन और बनाने हैं, सिर्फ 8 गेंदें बाकी। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही थंडरबोल्ट्स का भविष्य यहाँ पर बदल सकते हैं। और नौशीर
एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथों पर विकेट लंबे रन अप के जरिए अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 4 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress, 7 balls left, 24 more runs now they have to score for victory। इस ओवर में अंतिम बार नौशीर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, पुल दैट वन एंड ही हैज गॉट द डिस्टेंस, 6 runs, और गेंद सीधे जा चुकी है इस वक्त रास्ते पर। लंबा छक्का यहाँ पर लगता हुआ बल्लेबाज दर्शन के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा दर्शन थंडरबोल्ट्स की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रनों पर। 18 more runs they have to score for victory in last over। 18 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ चौके या छक्के ही अब यहाँ पर थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों को विजय तक ले जा सकते हैं, और 18 रन अंतिम ओवर में चाहिए। और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो छक्का झड़ा है दर्शन ने, वो छक्का इस वक्त उनके टीम के उम्मीदों को बरकरार रख चुका है, और इस वक्त 18 to get from last over। 18 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं, और गेंदबाज इस वक्त ध्रुव इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार श्रीजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 18 to get from last over, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज ध्रुव इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। पहली गेंद, और इस बार बीमार गेंद थी, और रन के लिए दौड़ पड़े, यहाँ पर रनआउट का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नो बॉल का भी इशारा हो चुका है, और रनआउट के रूप में यहाँ पर विकेट गिर चुका है। रन के लिए विकेट कीपर के हाथों में जैसे ही गेंद पहुंची, बीमार गेंद थी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े, और इससे पहले कि स्ट्राइक रन के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रू पहुंचता हुआ विकेट कीपर का गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिए थ्रो को रिसीव करने के बाद। नो बॉल का रन जुड़ चुका है। 17 to get now from 6 balls। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर दर्शन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। तो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर दर्शन ने जो छक्का झड़ा है, उसके बाद निस्संदेह इस ओवर में भी उसकी कोशिश वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी टीम को इस वक्त चौके और छक्के की सख्त जरूरत है इस मैच में वापसी करने के लिए, और दर्शन ने इस वक्त सामना करते हुए ध्रुव की गेंदों का ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला काफी ऊंचा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, और यहां पर इस कैच को लपक लिया है, लेकिन यहां पर फ्री हिट, बल्लेबाज दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर नहीं बच पाए रनआउट के रूप में। तो फ्री हिट गेंद थी, और शायद दर्शन के दिमाग में ये बात नहीं आई कि फ्री हिट गेंद है, तो वो देखते रहे कि कैच को वहां पर लपका जाता है या नहीं, तो वहां पर रुक गए थे, वरना निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरा रन मिल सकता था बल्लेबाज के लिए। तो एक रन यहाँ पर जुड़ चुका है, एक विकेट भी गिर चुका है। अब 5 गेंदें बाकी और 16 रन चाहिए। 16 runs to get from remaining 5 balls। अमन का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और इस वक्त अमन स्ट्राइकर एंड पर सामना करने के लिए तैयार ध्रुव की गेंदों का, और ध्रुव इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 16 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद विकेट के ऊपर से होकर, विकेटों के ऊपर से होकर सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, एक गेंद व्यर्थ। अब 4 गेंदें और 4 चौकों की जरूरत है। 16 to get from 4 deliveries, और ध्रुव एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद उछाला, लेकिन एक बार फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस बार कैच को लपकने में सफल।
तो 7वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा टीम थंडरवुल्व्स की उम्मीदें और कम हो चुकी है विजय की। तीन गेंदे बाकी, 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 3 डिलीवरीज। लगभग 3 छक्कों की जरूरत इस वक्त अंतिम 3 गेंदों में, और ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इस वक्त बल्लेबाजों के सामने। और ध्रुव इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों, वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, हालांकि थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा। 3 गेंदों में 15 रन चाहिए विजय के लिए। 15 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 3 बॉल्स। ध्रुव अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लंबे रन अप के जरिए ये गेंद इस बार उछाला, लंग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। और इस विकेट के पतन के साथ लगभग उनकी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं बल्लेबाजों की। अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज ध्रुव कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो 15 रन चाहिए 2 गेंदों में, और वैसा कहना पड़ेगा टीम त्रिशूल की विजय यहां पर निश्चित है अगर इन बचे हुए 2 गेंदों पे गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, लेफ्टी बैट्समैन। और ध्रुव इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए गेंदबाज, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद टॉप एज और सीधे कॉट बिहाइंड द विकेट। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी टॉप एज पर टकराने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, और इसी के साथ एक विकेट और यहाँ पर गिर चुका है। विकेट नंबर 8 डाउन एंड last ball remaining, 15 runs to get. Absolutely impossible task in front of the batsmen of team Thunderbolts. 9 विकेट गिर चुके हैं। अंतिम बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 15 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल, और ध्रुव इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपनी ओवर की अंतिम गेंद उनके अंतिम बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस, इस बार ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, दैट्स इट। 13 runs comprehensive victory for Team Trishul against Team Thunderbolts in the inaugural match of Fighters Trophy 2023, and with that 13 runs comprehensive victory they back the complete points. तो पहला मैच इस श्रृंखला का समाप्त हो चुका और टीम त्रिशूल इस मैच में विजय रहा 13 रनों से टीम थंडरबोल्ट्स के खिलाफ, और इस विजय के साथ टीम त्रिशूल परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है। अब इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला जाएगा टीम तुलना टाइगर्स और टीम आविष्कार के बीच में, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त शाफी परपुंजा के साथ राजभाषा कन्नड़ में, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी टीम तुलना टाइगर्स और टीम आविष्कार के बीच। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಟ್ ಕಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5, 1 ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತುಷ್ಟರಲ್ಲಾದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಖರತೆಯ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6-1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗಾರ ಆದರ್ಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜೇಸನ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7-0 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ರಾಹುಲ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಜೇಸನ್ ನಡೆವಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7-0 ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ರಾಹುಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಶೋಧನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಡೈವಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೈವ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಶೋಧನ್. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೇಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. Jason walks back to the pavilion with a golden duck in the very first match for team ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಶೋಧನ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡಬಡಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಆಟಗಾರ ಧೀರಜ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಊಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಧೀರಜ್ನ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತ, ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಪ್ರೀಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 8, 1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕಳೆದ 2 ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಒಂದೆಡೆ, ಆದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಆದರ್ಶ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 5 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರ್ಶ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಸೋಲುವಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆದರ್ಶನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸುವಂತ ಹೊಡೆತಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಓಟ, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದುಬಾರಿತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ದಾಂಡಿಗನ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2-3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 6 ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಆದರ್ಶ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ದಾಂಡಿಗ ಶಫಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಿದ್ರು. 5 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆದರ್ಶನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಆ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು, 22ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಜೇಸನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ.
18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 2 ದಿವಸಗಳ ಅದ್ದೂರಿಯ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ UCG ಮೈದಾನದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಫೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಧೀರಜ್. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶನ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಆದರ್ಶ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹುಲ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಯಸುವಂತ ಚೆಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ LBW ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ನೇರವಾಗಿ ಆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್, ಹೈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಬೀಮರ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಅ ನೋ ಬಾಲ್ ಹಿಯರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ರಾಹುಲ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಆದರ್ಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಆದರ್ಶ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 26. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಹುಲ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಆ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್, ಅತಿ ಸೊಗಸಾದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಥ್ರೋ ಇದು. ಸುಸೈಡಲ್ ರನ್ ಔಟ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಸೈಡಲ್ ರನ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧೀರಜ್ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾರ್ಪ್ ಥ್ರೋ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಥ್ರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡ. ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಪವನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಪವನ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು,
ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟಿನ ವೀರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್, ತಂಡದ ನಾಯಕನು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತುಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪವನ್. ಹನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತುಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ತುಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 28. ಪವನ್ ಎಸೆದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡುಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಲು ಪವನ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, 3 ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಯಾರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪವನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನ ಬಲನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು ಪವನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತುಶ್ವಿತ್ ಸಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ! ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್. Pawan, the captain himself, doing the damage here for the opponent. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ವಿಕೆಟ್, 2 ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್, 2ನೇ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್, 4ನೇ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಸೆದ್ರು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪವನ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಓಟಗಳಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ ನಂತರದ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತದ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾದ ಓವರ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as the situation of the game is concerned. 4ನೇ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್, ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾದ ಓವರ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಸಹ ಆಟಗಾರ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2ನೆಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಆದರ್ಶ್ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿಶಿರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಫಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು
ಶುಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಶಿರ್ ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಎರಡು ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 31. 4 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಶಿರ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆಗಾರ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಡವಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿಶಿರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ಒಂದು ರನ್ ಅಪ್, ಅದೇ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಓಟದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ 35. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಓಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 2 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿಶಿರ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ವಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವಾಟರ್ ಲೈನ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಎಸ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ರಿಕಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜಾಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿಶಿರ್. ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ 35 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಹಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 35 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡ. 36 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ ರಾಹುಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು.
see the strategy from Team Avishkar to win this match, and wait and see how well Team Tulnadu Tigers will going to get this total score of 36 to win this match. So power play will going to start from the commentary box end, and the bowler Dikshit will going to start the proceedings from the commentary box end, and opening batters already made their way to the middle of the pitch. They're taking their respective position. Rahul is in striker's end, Prajwal is in non-striker's end, and umpires for this match, umpire Sachin. Sachin and Vaishak are the two umpires, the field umpires. The first ball, nicely bowled. That is a perfect start. Dikshit this time just got that one outside the line of off stump. Slight a bit of movement in the negation, not a huge movement, but it's quite enough for him to defeat the bat of opening batter Rahul. Missed it complete, then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Dikshit once again, seaming away from us. Right over the wicket, this time off the back foot, lofted down to deep long on region. Protection has been given in the deep, and good piece of fielding there by the fielder. Might be the fielder down at deep long on, did a great job because he's standing in the wideish long on region, so that he had to cover the ground from wideish long on to deep straight long on. So he managed to field the ball just inside the boundary line, and ample time for Rahul to complete that couple of runs. With that couple of runs covered, numbers on to 2 on the board without loss of any wicket. Dikshit again, ball, lovely delivery, beautifully balled, perfect delivery, Yorker length, right on the block holder. Just seeing that the initial moment of the batters shuffled across the line of the delivery, wanted to get that one in the onside region, and a very good line interrogation there from the bowler Dikshit, bowled right on the block holder of Rahul, and not really given any opportunity for the batter to freeze their arm. Again, Dikshit bowls. Right over the wicket, right, and this time ball is on the almost in the off volley, outside the line of off, impression on the middle and leg stump, and he wanted to drive the ball, but a little bit a mistake there from the fielder at short mid wicket. Of course, he's just trying for the run out, hits the stump, and after ball hits the stump, and the batter has got opportunity to get the single in the form of overthrow. One more addition to total, with the addition of that single scored numbers on to 3 on the board without loss of any wicket. The batter Rahul wanted to change his bat. He is not happy with his bat. And now Prajwal is on strike. The run rate required just over 7 runs per over. And wait and see how well Team Tulnadu Tigers will going to get that 36 runs in their stipulated 5 overs. Dikshit once again back to his bowling mark, away from us. Right over the wicket, lovely delivery, beautifully bowled. Just a good change of line in the negation. Seeing that batsman moving towards the onside region, just to try to wanted to get that one into extra cover region, making a little bit room to play the shot, and just bowler bowling away from the bat of the batter outside the line of off stump, and there is no chance at all for any run. Dikshit again, right over the wicket, batsman on off the back will try to cut that one, but ball went towards the deep extra cover region between cover point and extra cover. One more single, good start there from Dikshit. Absolutely, it's a decent over. It's not so easy when you're bowling in the power play over, when the only 2 fielders outside the circle. I think Dikshit bowled very well, and just 4 runs came from that over, chasing 36 to win this match. And Team Tulnadu has got a steady start without losing any wicket. They got only 4, and that means they have to get another 33 runs in remaining 4 overs. And 24 deliveries and 34 more runs required for the victory. 32 more runs required for the victory, in fact, and 24 deliveries. And the run rate now is climbed up after that quiet over. The run rate required now exactly 8 runs per over. Likit brought into attack from the far end, Sri Rama Bhajana Mandira end, and he will go into ball at the second over. For the latecomers, you are watching the second match of day number 1 of this prestigious Fighters Trophy, which is proudly organized by Team Real Fighters in this historical UCG cricket ground. And after that power play, we can see that so many bodies out there in the deep. One at deep long off and at deep long on. One mid wicket is there. One square leg which is behind the square.
One at deep cover point. Here is a first ball. Right arm over the wicket. Driven that one upishly and quite safely down to deep cover point region. Misfield there by the fielder. And just the fielder managed to field the ball inside the boundary line. After that fumble. And the batter has got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 6 on the board. And Prajwal is off the mark, and you got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard is 6 on the board. Slight a bit of change in field now. In mid of coming towards a short extra cover region. This time off the back foot, just reaching for the delivery, which is outside the line of off stamp too much. And he cut that one very hard. And ball went towards a deep cover point region. One more single. With that single, scoreboard now moves on to 7 on the board. After this match, the match will be played between Team Real Fighters versus Team MPC. So that I request captains, please report here for the toss. Lofted at one, handsome and absolutely fantastic one. This time Rahul got that one right from the middle of the bat. Ball is almost in the slot. And he just lofted that one over the deep long on boundary for a huge one. And with that 6 scoreboard, which is jumps into 13 on the board without loss of one wicket. Wicket again from the far end. Right arm over the wicket. Again, once again, this time off the back foot. Straight down the ground. As straight as an arrow. And this time ball is just landed into the gallery. The spectator gallery. And in a deep straight long on region. Back-to-back 2 sixes. Takes the match away from the opposition. Naked balls, this time a full toss, low full toss, and batsman drives that one down to cover point region. They're charging in for the second run because ball went in the gap, so that Rahul has got ample time to come back for the second. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 21 on the board without loss of an wicket. It's going to be a productive over, and the bowler slight a bit of expensive wicket. This time driven that one down to deep extra cover. One bounce into the fence for 4 runs. Rahul is on fire. Rahul is on fire, and scoreboard now jumped into 25. It's been an expensive over. 21 runs came from that over. 21 which came from that over. That means the team Tulunadu are looking in absolutely in a driver's seat of winning this match. And Rahul, especially the man is gone after wicket in the previous over, and got 2 sixes and 1 boundary. So 25 in the sense, just 11 more runs required for the victory in remaining 3 overs. Looks to be the target is very easier now for team Tulunadu, unless any miracle bowling, unless any magical bowling from the bowling department of team Avishkar. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ MPC ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ MPC ತಂಡದ MPC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MPC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Went for the reverse stroke, but Prajwal fails to have a contact with the bat in that occasion because the bowler Dikshit, one of the recognized bowler for the side of team Avishkar, you know exactly the kind of comeback which is required for his team. One good over which is badly required. Dikshit. This time he lofted it. That's a huge one. This is gone many miles. Now I think Prajwal joining the party. The Prajwal joining the party. After that, his partner hitting 2 sixes in the previous over. Why not? Now it's a time for me to get some big shots. And he got absolutely a huge one. And the scoreboard jumps into 31 now. Again, outside line of off stump, going to be a punishable not from the batter but from the umpire, because that ball is going further away outside the line of off stump. And one more addition to total with the addition of that single score. Moves on to 32
Just a boundary. There's a 4 runs which is required for the victory. He finished the match in a style. He finished the match in a style with a huge one. Down to deep extra cover. Comprehensive victory of our team Tulnadu against Avishkar. And they won the match by 10 wickets. A huge victory because they finished the match in just 2.4 overs. And that means it's going to be the huge victory for the team. And now it's the time for the two teams. Team Real Fighters versus Team MPC. One more big match which is coming up here. What an outstanding performance from the opening batters, Prajwal as well as Rahul. They really finished the match too early. The captain of Real Fighters won the toss against Team MPC. Looks like they will go into field first. This is the match number 3. We're going to start after a short break. Thank you.
So the openers for Team MPC is now at the middle of the pitch. Saurav is now going to face the first ball of their innings, and the non-striker is Sai Darshan. And Neville is now starts the fresh proceedings, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई रक्षात्मक तरीके का खेल इस वक्त सौरव ने खेला इस वक्त, और आखिरकार गेंद को स्लिप मिड ऑन पर फील्ड कर लिया गया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो मैच नंबर 3 फाइटर्स ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल फाइटर्स, टीम रियल फाइटर्स ने, और ये श्रृंखला जो कि इस श्रृंखला का तीसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। नेविल एक बार फिर से तैयार था, इन हाथों पर था विकेट, ये गेंद सौरव के लिए हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए लगभग बल्ले के ऐसा कहना पड़ेगा टॉप एज पर गेंद टकराई, टॉप ऑफ द बैट इनफैक्ट, और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन से नहीं मिलेंगे। तो 2 बेहतर गेंदें इस वक्त नेविल फेंक चुके हैं, और सौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से नेविल की गेंदों का, सौरव एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और इस वक्त सामना करते हुए नेविल की गेंदों का दाहिना हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। टीम एमपीसी का 1 रन बिना किसी नुकसान के, निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत टीम एमपीसी के सलामी बल्लेबाजों को इस वक्त करनी है। अगर उन्हें यहाँ पर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो लगभग 50 के आसपास उन्हें रन इस वक्त बनाने होंगे, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो टीम रियल फाइटर्स के खिलाफ, क्योंकि टीम रियल फाइटर्स जो कि पिछले साल की चैंपियन टीम है, सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप उनके पास है, और ऊपर दबाव डालना है तो ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बल्लेबाज को बनाने होंगे। यहाँ पर बेहतर गेंद थे, एक्स्ट्रा क्विकर, और गेंद उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में गेंद को दबाना चाहता, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए, रन से बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नेविल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त बॉर्डर वाइड स्लॉग आउट पर, गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर नेविल एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को स्टीयर करना चाहा, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद स्लिप मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 5 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर, माफ कीजिए 6 गेंदें, 6 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर फेंक चुके हैं नेविल, और ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा स्लो स्टार्ट इस वक्त कर चुका है टीम एमपीसी, 3 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर टीम एमपीसी आफ्टर बीइंग losing the toss and opportunity to bat by team real fighters, they made a slower start. In fact, they managed to score 3 runs on the board, yet to lose any wicket after the completion of first over, and still in overall calculation 4 overs now remaining in their innings. पहला ओवर अंडर पावर प्ले बेहतर तरीके से इस वक्त नेविल ने फेंका है, और दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज नोयल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए, सौरव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। नोयल गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, गेंद इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है यहाँ पर 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck came from the bat of Saurav. इस बार ऐसा कहना पड़ेगा, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one hard and high, and because of that he's got the distance at deep mid wicket for 6. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर इस वक्त स्विंग किया खूबसूरती के साथ, सौरव ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर
दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट फाइटर्स ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम रियल फाइटर्स ने। गेंदबाज ये गेंद फुल टॉस, pull that one and he's got the distance. It's gone many a miles from the fence. Absolutely fantastic struck came from the bat of the batsman Sai Darshan. ऐसा कहना पड़ेगा, just charging down the wicket and got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over wide long on fence for a huge one. Fantastic struck और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, पटके हुए गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया गेंद को इस वक्त, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर काफी हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं गेंदबाज नोएल। 14 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं और एक बार फिर से तैयार ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट एक कांट फाइंड द गैप क्लीनली और गेंद सीधे पहुंची इस बार सिले डाउन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। तो इसी के साथ अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज नोएल अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार सौरव के लिए। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे इस वक्त तैनात और इसकी वजह से बल्लेबाज को रन से मिले एक और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सो फैंटास्टिक ओवर केम टू एन 18 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। So fantastic over in team MPC's point of view came to an end. 15 runs came from this over and because of this over they are now back in the match. Still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. 3 over का खेल अभी भी बाकी और तीसरा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त देखते हैं कौन सा गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मैदान की दाईं ओर भव्य जो स्टेज यहाँ पर सजाया गया है वहाँ पर विनर्स और रनर्स की जगमगाती हुई ट्रॉफियां इस वक्त विराजमान है और उस शानदार स्टेज की शोभा को और बढ़ाती हुई 2 बेहतरीन ऊंची ट्रॉफियां और निस्संदेह कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करता हुआ गेंदबाज नेविल दाहिने हाथों पर द विकेट फुल टॉस इस बार बल्ले का बाहरी किनारा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फॉर द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स इस वक्त प्लेयर्स डगआउट में इस वक्त मौजूद अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन मैच इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ 2 बेहतरीन टीमों के बीच टीम रियल फाइटर्स और टीम एमपीसी के दरमियान और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीम मारेगा जवाहर 4 रनों के लिए। Just shuffling across the line and he picked that one right from the spot और गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ उछाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज ने। ऐसा कहना पड़ेगा his footwork was absolutely exquisite और पोजीशन काफी तेजी के साथ लेते हुए जितनी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनके बल्ले की ओर आई उतनी तेज रफ्तार के साथ एक्सक्विजिट फुटवर्क द्वारा गेंद को इस वक्त पुल कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए बल्लेबाज साई दर्शन ने। और एक बार फिर से नेविल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर इस वक्त गेंद जाकर गिर चुकी है। ऐसा कहना पड़ेगा कमेंटेटर बॉक्स के छत पर गेंद जा चुकी है 6 रनों के लिए। तो ऐसा कहना पड़ेगा 4 and 6 एंड साई दर्शन लुकिंग ऑन फायर और 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 29। नेविल 11 रन पहले 3 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट ये इस बार सफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को उछालना चाहा स्वयं अपने आप से नाखुश हुए अपने नाखुशी का बल्लेबाज ने इजहार किया अपने हाथ को अपने जांग पर मारने के बाद, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा की गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूट चुकी है तेजी के साथ 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ टीम एमपीसी
और नविल इस वक्त गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद सौरव के लिए उछालना चाहा, इस बार साई दर्शन आगे निकल आए, निशाना चूका और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। डाइविंग लगाते हुए अपना विकेट अंतिम क्षण में बचाने में सफल, और गेंद थ्रो फेंका था जरूर लेकिन गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराए और इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। नविल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, दाहिने हाथ ओवर द विकेट लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, गेंद को इस वक्त खेला नॉन सेकंड के स्टंप्सों पर जाकर गेंद टकराए, स्टंप्स बिखेर कर गिरते हुए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, लगभग ब्लॉक होल पर गेंद आई थी, गेंद को जगह बनाकर खेलना चाहता सौरव ने लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। वन मोर गुड ओवर इन टीम एमपीसी's point of view came to an end. 13 runs came from this over and after completion of 3 overs they are looking in the commanding situation. It's 31 without loss after the completion of 3 overs. तो इस वक्त खिलाड़ी पानी का ग्रहण यहाँ पर करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और खिलाड़ियों के साथ इस वक्त अंपायर भी पानी पीते हुए और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में और एक बार फिर से खेल पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ, दोनों बल्लेबाज सौरव और साई दर्शन कुछ आपस में बातचीत यहाँ पर करते हुए बल्लेबाजी के रणनीति के बारे में, बैटिंग टैक्टिक्स के बारे में। 31 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स और तो इस बीच यह गेंद टॉप एज मौका हो सकता है मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ सौरव की बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को उछाला जरूर रहा लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट और गेंद सीधे पहुंचे डीप मिड विकेट, फील्डर जो गेंद की ताक में खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ सौरव की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है और 31 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम एमपीसी। They lost their first wicket after being adding 31 runs for the first wicket. Saurav departs. Now they are 31 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. तो सौरव का इस वक्त तालियों के साथ स्वागत करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी प्लेयर्स डगआउट में और उनका स्थान ग्रहण करते हुए इस वक्त कार्तिक इज नाउ कमिंग एज अ नंबर 3 बैट्समैन और वो इस वक्त सामना करते हुए अच्छी गेंद थी, इस वक्त थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पैड पर मिस फील्ड वहां पर लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और फिर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, पटके विकेट। This is an effortless. This is an absolutely effortless. He's hit that one after being connecting right from the middle of the bat effortlessly and dispatching it at Whitey's long on fence for a huge one. छक्का इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज साई दर्शन के बल्ले से और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और बुलंद यहाँ पर कर चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद अपील जरूर लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और इस वजह से सब कुछ से सुरक्षित था। ऐसा कहना पड़ेगा कि टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल ली थी और इस उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बीट हो गए और अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए टीम एमपीसी के लिए और एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ टीम एमपीसी। दाहिने हाथों पर था विकेट, गेंदबाज धीमी गेंद परिवर्तन के दौर पर पेस का चतुर परिवर्तन, जस्ट चेंज ऑफ पेस द लास्ट मोमेंट, इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए और स्ट्रोक्स खेलने में नाकामयाब। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 39 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट
स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। अंतिम ओवर का खेल बाकी। देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में टीम एमपीसी के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। जहाँ तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 50 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचना होगा टीम एमपीसी को, क्योंकि इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में जो गेंद इस्तेमाल की जा रही है, ट्रेनिंग नामक गेंद, और वो गेंद काफी सख्त है और बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने में काफी हद तक सहकारी हो रही है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और अंतिम ओवर का खेल यहां पर शुरू होता हुआ। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और मनीष गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द रिंग्स। पहली गेंद तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला साई दर्शन ने, लेकिन यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को लपक लिया गया है लॉन्ग ऑफ पर। इस वक्त उछाला था जरूर स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, लेकिन गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में असफल। लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे नेविल, जिन्होंने इस कैच को बाखूबी लपका और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। और लॉय, माफ कीजिए, जो कैच को इस वक्त लपकने में सफल रहे थे। तो जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो सिर्फ 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। तो निस्संदेह इस वक्त एविएशंस, स्टैंडिंग एविएशंस इस वक्त करते हुए साई दर्शन का टीम के अन्य खिलाड़ी। और जहां तक सवाल है इस वक्त 26 रन साई दर्शन बनाए। He scored 26 runs, including 3 massive sixes and 1 boundary. And after playing a fantastic knock for their side, he is back into pavilion. नए बल्लेबाज सामना करते हुए स्विंग किया मिड विकेट पर, फ्लैटर वर्जन, और बेहतर तरीके से इस कैच को लपक लिया गया है। गेंद को ऑन साइड पर उछाला जरूर फ्लैटर वर्जन पर, लेकिन प्लेसमेंट गलत और गेंद डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंचे और इस गेंद को बेहतरीन तरीके से फील्डर वहां पर लपकते हुए। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 wickets now. 4 balls remaining in their innings. तो निहाल का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे मनीष की गेंदों का। मनीष अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार निहाल के लिए, अपने लंबे रनअप के जरिए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए निहाल, फुल टॉस, स्विंग्स इट अवे एंड दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी टेकन इनसाइड द फेंस। यस, टेकन कंफर्टेबली बाय द फील्डर एट डीप मिड विकेट। और जैसे ही फील्डर ने कैच को लपका, टीम रियल फाइटर्स के डगआउट से सीटियां और तालियों की आवाज यहां पर सुनाई देती हुई उनके समर्थक यानी सपोर्टर्स द्वारा। और यहां पर पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में विकेट गिर चुका है निहाल का। और जहां तक सवाल है कंसेक्यूटिव विकेट्स इन द लास्ट 2 consecutive deliveries for Manish, 3 wickets in fact, the first hat trick of this tournament went into the account of Manish। और पहला हैट्रिक इस श्रृंखला का लेने में सफल और 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। तो इस वक्त अपने चौथे विकेट की तलाश में अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मनीष था। हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चौथा विकेट हो सकता था। आई थिंक इसको डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले का अंदरूनी किनारा शायद टकराया था, लेकिन इस गेंद को लपकने में असफल विकेट कीपर और इस वजह से बल्लेबाज यहाँ पर इस गेंद पर बच चुके हैं। तो 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में मनीष फेंक चुके हैं और बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ। कोई भी रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान नहीं किया है अब तक पहले 4 गेंदों में। और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार पर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो 2 गेंदें बाकी और देखते हैं इन 2 गेंदों में बल्लेबाज कितने रन और बटोर पाते हैं।
दाहिने हाथों पर द विकेट मनीष बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए अगली गेंद ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फिफ्थ कंसेक्यूटिव डॉट बॉल एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन टीम रियल्स पॉइंट ऑफ व्यू टीम रियल फाइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. So 5 consecutive dot balls in the last over of their innings, and this is an absolutely fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler Manish. अंतिम गेंद बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद पर उनके इस गेंद को भी डॉट कर पाते हैं मनीष, ये ओवर मेडन कर पाते हैं या नहीं. दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. इट्स गॉट अ सिंगल, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल. आई थिंक it's off the bat and run out is also happened. तो एक रन जुड़े, सिर्फ एक रन इस ओवर में मनीष ने प्रदान किए. निस्संदेह इस बेहतरीन ओवर की बदौलत जो मनीष ने फेंका 3 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किए इस ओवर में. 4 विकेट अंतिम ओवर में गिरे और अब 5 निर्धारित ओवर समाप्त होने के बाद यहाँ पर टीम एमपीसी जोड़ चुका है 40 रन. 40 स्कोर्ड बाय टीम एमपीसी for the completion of 5 overs, and now the target for team real fighters is 41. They have to score in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 8.20 runs per over. और देखते हैं 41 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम रियल फाइटर्स के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाते हैं. तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में शाफी परपुंजा के साथ, जब टीम रियल फाइटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನೆವಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನಾಯಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳು 41 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್, ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೆವಿಲ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ತಿರುಪುಗಾರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 30 yards ನ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗೆ ನೆವಿಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ವೈಡರ್ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಓವರಿನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ in the gap, one bounce into the fence over deep mid wicket for 4. Boundary number 1 here from the blade of Mr. Noel. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ನಾಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೂ ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಗೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಒಂದೆಡೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 6. 6 on the board after the completion of the third ball in the first over. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು ನಾಯಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಟೈಮಿಂಗ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಲ್. 4 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 10. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವರಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ 2 runs ಫಾರ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. 2 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, 1 bounce ಓವರ್, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ 4. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನಾಯಲ್ is on a fire. Third boundary here from the bat of Noel. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 16. 16 on the board. Fantastic start here for team Real Fighters. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಳೆದ 2 ಆವೃತ್ತಿಯ SCL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ನಾಯಲ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆರಂಭ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಓವರ್, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಿಯಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಓವರ್ ಮನೀಶ್ ಎಸೆದಂತಹ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ABD ವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು
ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೆವಿಲ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವರದಾನವಾದಂತ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದೇ. ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಾತೆಗೆ, ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24, 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು, 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದ ವಿಖ್ಯಾತ್, 5ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಮನೀಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ಕರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್, 2ನೇ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಎಸೆತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಗಸಾದ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೆವಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಲ್ ಇರುವ ಜೊತೆಗಾರರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭವನ್ನ ನೀಡಿ ಆಗಿದೆ. Straight down the ground, 6 number 2 from the blade of Neville. What an innings they are playing here. 2 overs and 30 on the board. What a batting display this is from real fighters. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಇದು. ನೆವಿಲ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ನಾಯಲ್ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 11 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಾಂಡಿಗಾರರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಜವಾಗಿ ಓರ್ವ ಬೌಲರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಮನೀಶ್ ಎಸೆದ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಂತ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಬಳಿಕ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್, oh my goodness, once again over deep mid wicket for 6. ನಾಯಲ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು.
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೆವಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38, 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ರನ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರನ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 38, 15 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 3 ಓಟಗಳು. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ and Neville finishes off in style. Boundary to finish the game number 3. What a finish this is. 2.4 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆವಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾಯಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೆವಿಲ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನಾಯಲ್ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನೋ ಲಾಸ್ ಚೇಸ್. This is for team real fighters. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ನೀಡಿದ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತಿಸಿದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ನೆಬಿಲ್ ಮುಖ್ಯನ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಕೂಡ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ತರುವಂತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್.
So everything is ready here for the match between two very good teams. Team SDM Mavericks versus Team Samrat. And Rishabh as well as Dikshit, the opening batters, are in the middle. And Devi Pratham will going to start the proceedings from the commentary box end. So Devi Pratham bowling away from us. Right on over, they get beautifully ball, absolutely right on the money. The first ball itself, he's got a very good line and length in the occasion. Almost ball just moving from the good length spot and just forcing the batsman onto the back foot. And batsman tried to play that one defensively, but quite hardly played that one down to point region, and there is no chance at all for any run. Devi Pratham again bowling away from us. Right on over the wicket delivers. This time almost ball in the block hold, but negotiated very well by the batsman, just getting that one right from the middle of the bat down to deep long off region for a single. With the single, the team Samrat there open the account, and even Rishabh is off the mark with a single. Left and right combination, and left and right combination here for team Samrat, and after that Rishabh picked up a single, and Dikshit will going to be the striker as the left hand batter. And for left hand batter, there is a fielder in the deep square leg and one fielder in the deep long on, and altogether 4 man in the onside region, 5 in the off. Short mid off, short extra cover, short cover point, backward point, short third man. There is a square leg, short mid on, one fielder down at deep square leg and one at deep long on. And Dev Pratham seaming away from us. Round the wicket. Balls beautifully ball, perfect one. Almost that ball is in the off volley, but off volley in the sense is a slight bit of low full toss, and the ball just defeating the bat of Dikshit. He wanted to drive the ball towards extra cover region, and ball which is carried very well to the wicket keeper's hand, and there is no chance at all for any run. Good start from Devi Pratham, and very young talented all-rounder Devi Pratham. Is bowling away from us. Right arm round the wicket. Bowled him, cleaned him up. Devi Pratham has got a reward for his excellent line and length. This time Dikshit absolutely nowhere near the pitch of the delivery, isn't it? He wanted to drive the ball towards onside region, but the line of the delivery almost in the off stamp. And Devi Pratham strikes in his first over. And it's going to be a fantastic start here for team Mavericks. They got a huge wicket of the left-hand batsman Dikshit. Is cleaned him up by the beauty of the delivery. The shackling start here for team Samrat. 1 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. So left-handed batsman replaced by another left-hand batsman. Anush brought into attack. Anvish protection is the batter. Anvish will go into face Devi Pratham. Bowling away from us. Slower one, full toss delivery. Because of that slow full toss, the batsman couldn't manage to get the timing right. But just a single in the negation here for Anvish. Anvish is off the mark, and total score now moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Team Samrat against team SDM Mavericks after their loss on the toss, selected to ball pass. So far it's good going here for from Devi Pratham. It's not so easy condition whenever the bowler coming in power play overs where there is you can keep only 2 fielders outside the circle, and so far Devi Pratham has really good job. This a lovely shot, crashing cover drive, and ball is just got the distance. Unbelievable struck. Absolutely a glorious shot. Rishabh, it's in the negation, is just a really crashing lofted cover drive, isn't it? Slight a bit of wit is offered there by Devi Pratham, and batsman latching out to that, lofted that one down to deep cover point boundary for a 6. The kind of treatment which is required for that kind of line, and especially when you are not having enough score in this power play over, then I think this is the right time. Rishabh, the last delivery of the over, he's got the distance. A flatter version, ball is just hitting the wall, and because of that they got the run what they really wanted in the first over.
So 8 runs came from the first over of Dev Pratham. Not a bad one. Seeing that he picked up 1 wicket, bowling in the power play overs, always difficult condition for the bowler. Excluding that 6, I think he bowled well. But this is a small format of the games. It's very difficult for the bowler to survive. Any small mistakes, the batsman will go into capitalize. The second over going to start from the far end. Saurav is in operation from the far end. Anvesh is on strike after that power play. We can see that spread out field. Still it's a 5 fielders inside the ring, quite strangely. There is only 4 fielders outside the circle, 1 at deep square leg, 1 at deep mid wicket. There is no long on. Now mid on going back to deep long on. There is a long off and deep extra cover. Now I think it's going to be a perfect field position. 5 fielders outside the circle, deep long on is there, long off is there, deep extra cover and a deep square leg. The first ball. Full toss, swings it hard, 1 bounce into the fence for 4 runs. So juicy full toss here for the batter. Anvesh just capitalizing that one. Of course he wanted to hit the ball, but he wanted to hit the ball in the gap. There's a deep long one and there's a deep square leg, but he just plays it down to deep mid wicket region, the vacant area, and with that boundary Scober jumps into 12. Again the full tosser drives that one powerfully. Protection is given in the deep long off region so that slide a bit of wide throw coming from the fielder. The opportunity for the batter Anvesh to get back for the second, and they completed that second run quite easily in the end. And with that couple of runs, Scober moves on to 14 without for the loss of 1 wicket. In fact, the wicket of Rishabh is back into pavilion. Dikshit is back into pavilion. This time slower one, change up pace, and good bowling there from Saurav. This time he just bowled a slight a bit of a slower one, so that very difficult for Anush to get that one from the middle of the bat. Anvesh is batting now. This time again he's going for the big shot, but I think it's going to be a little bit difficult one, isn't it? Whenever the bowler bowling a slower one, batsmen have to wait for the delivery. The slight a bit of urgency early into the stroke and mistime that one, 2 deliveries, and there's a good comeback here by the bowler. After that 1 boundary, then he back very strongly with some good delivery. Again the slower one, but placement is not good. The slower one, low full toss, batsman tried to hit the ball over the deep long on, but he's just finding the fielder down at deep long on. And it's absolutely good thinking bowling there from the bowler, and he got the reward for that. One of the best weapons to use when the batsman is in an aggressive frame of mind. If you bowl the slower one, always he got opportunity to get the wicket here. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement and the timing, and he just pays the penalty for that. Wicket number 2 is gone. It's 14 for the loss of 2 wickets. New batsman in his strike. One more Vaishak. The 2 left-hand batters are back into pavilion. Now Vaishak is a new batter, just came into middle. The new to get one partnership here. The Rishabh is the one standing in the other side, just waiting for the support from his teammates to get some partnership. But Saurav, a successful bowler. Both opening bowlers managed to pick a wicket here. Around the wicket, Rishabh. Full toss, driven that one right in the gap. Down to deep square leg region. Oh, poor piece of fielding. It's not a kind of effort which is required from the fielder who is fielding in the deep, isn't it? He tried to stop the ball from his legs instead of putting his 2 hands to the line of the ball, but he tried to get that one into his legs, but he missed it completely, and ball defeating his leg, and ball went towards a deep square leg boundary for 4 runs. A welcome boundary. The second boundary is over. With that couple boundary, Scober moves on to 18 for the loss of 2 wickets. Saurav again. Wow, what a shot! Beautifully driven, and it's gone now into the road. Absolutely. A fantastic stroke came from
The batter, Vaishak. Umpire, just a minute. Just a minute.
thank you very much and welcome back. Nabil will go into ball the first delivery of the over number 3. Right arm over the wicket bowls to Rishabh. Went for the reverse stroke, but opportunity of run out, and the bowler on his follow through tried to hit the stump, but it's a back flick which is not enough for him to get the stumps, and the batsman survived. Just slight a bit of hesitation for the run. Rishabh is not interested, but his partner Vaishak is very much interested to get the single, but there is no chance at all for any single there. Right arm over the wicket, balls full toss again. Juicy full toss outside the line of off stump. Batsman Rishabh unable to take the advantage of that full toss, which is a slight bit of outside the line of off stump, and batter completed a single. With that single, scoreboard moves on to 25 on the board in the over number 3 is in progress. Nabil bowling away from us. Right arm over the wicket. Full toss, lofted, and I think there is a fielder in the deep. There is a fielder in the deep. Will going to complete the catch. The over wicket number 3, which is back into pavilion of team Samrat. It's a 25 for the loss of 3 wicket. Team SGM Mavericks, absolutely, they got the wicket here. They needed some wickets. They wanted to put the break on the run rate. It's a good going here for so far from team Samrat, the batters, but they're really losing the momentum, and each and every over they're losing the wickets, and the cricket intervals they're losing a wicket here, and the scoreboard is 25 on the board. For the next match, I request the 2 teams captain please report here. After this match, team Thunderbolts versus team MPC. So that I request both the teams please get ready, and I request both the captains please report here for the tossing ceremony for the next match. Neville bowling away from us. Right arm over the wicket. Lovely delivery. Absolutely perfect stuff here from Neville. Is looking very good so far in this particular over. The new batsman just came into middle is Amit. This is a fresh leg, and it need to take a little bit time to settle down. So Neville knows that it's a perfect time for him to bowl some good deliveries. So last time in this over, Neville bowling right arm over the wicket. Again the full toss, slow full toss, just a single here for Amit. He will going to retain the strike for the next over. Over number 3 completed. After completion of over number 3, the scoreboard is 26 on the board. 26 for the loss of 3 wickets. The run rate is almost 8.5 runs per over, 8.66 runs per over. And wait and see how many runs they went to score in the remaining 2 overs. The equal battle is on between these 2 teams. So very good, decent and colorful spectators watching this fantastic game of cricket. Of course, it's a perfect time for cricket lovers, but more than cricket, someone is very busy with the chatting, and especially the captain himself, the captain of Real Fighters, very much busy with the and yes, of course, the 3rd over is going to start from the 4th over is going to start from the far end. Prasad brought into attack, and he will going to bowl from the far end. Amit is on strike. Right arm over the wicket delivers. This time lofted, and fielder, and drops the catch. Can you believe that? Absolutely not that much of tough one, I want to say. The fielder is got underneath it, but while he's coming from the deep long on region, slight a bit of urgency,
It just might be just removes his eyes on the ball. A ball just having a slight a bit of hitting his palm. Then ball went towards a deeper wide-ish long on boundary for 4 runs. Lucky boundary of Amit, but every run is going to be very crucial. And the scoreboard is 30 on the board for the loss of 3 wickets. The bowler again from the far end. Right over wicket, absolutely perfect short pitch delivery, isn't it? Well directed short pitch delivery, and the slight a bit of difficult short pitch one, which is just moving away from the right-hander batsman, just outside the line of off, and then wicket keeper behind the stump did the rest. Devi Pratham, the wicket keeper, and back to bowler. This time again off the backward, drives that one, and a good fishing there by the fielder. Slide a bit of fumble from the fielder, but just a single for the batters. So with that single, scoreboard numbers on to 31 on the board. Prasad once again back to his bowling mark, seaming from the far end. Alright, over the wicket balls. Oh, thick is outside edge of the bat, defeating the wicket keeper. The third man fielder, fine leg fielder, have to run towards the deep third man region. Before we will going to collect that one, ample time for the batter to collect the couple of runs here. Rashab picked up his couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 32. 33 on the board. Slight a bit of correction. 33 for the loss of 3 wickets. And the over number 4 is in progress. Prasad again. This time, nicely driven, glorious cover drive, and protection is given in the deep cover point region. Delightful stroke there from Rishabh, but unfortunately he will going to get a single for that. But that stroke will going to give a lot of confidence for the batter, even though he will going to get a single for that. But that is a quality cricketing stroke. 33 on the board. Prasad. Final time in this over. Right over the wicket, Amit. Again the Yorker line delivery. Batsman tried to take that one in the pull, but missed it completely. Ball is hitting his bat. One more single is added to total. With that single, 4th over completed. After completion of 4 overs, searching for the right track. Team Samrat 35 on the board, and they're going exactly under 9 runs per over. Last over remaining, last and final over, and Devi Pratham, one who bowled the first over, and he will go into ball the last over as well. And first over he conceded 8 runs and picked up a wicket. This is a different story because he bowled in the power play over. Now he is bowling with some extra protection in the deep, 5 fielders in the deep, and here's the first ball. Oh, that's a full toss, juicy full toss, absolutely bad miss, I want to say. And Rishabh certainly will not going to, Amit I think is not going to impress with that his effort, because it's shuffled across the line of delivery. Try to make a little bit improvising cricketing stroke, but that full toss which is missing his bat and hitting the leg. One more single is added total. Scoreboard now moves on to 36 on the board. Devi, Rishabh almost drags the ball into the hands of short mid wicket. The line which is so good in the relegation. Even the batsman trying hard for the big shot on the onside region, but it's a very difficult line to hit the ball on the onside region, because Devi Pratham knows that that intention of the batsman is going for the big shot, so he bowled outside the line of off stump. 3rd time in this over. Slower one, full toss. The opportunity for the fielder in the mid wicket. Oh, he drops the catch. This is a second drop catches. Catches win the matches with one of the greatest slogan in cricket. This is a 2 catches which is missed out by the fielder of team SGM Mavericks. The fielding which is not really up to the mark. The big loss here for the bowler as well as for the team, because not only they lost the wicket, but they couple of runs for that drop catches. With that couple of runs, Koban moves on to 38 on the board. Now Devi Pratham stopping his run up, seeing the batsman almost shuffled across the line of the delivery. The batsman intention to disturb the concentration of the bowler,
This time, what a delivery. What a fantastic delivery. That one, absolutely perfect line. The misjudgment there by the batter. He thought it might be wide, but maybe the batsman is almost standing outside the line of leg stump. When you are standing outside the line of leg stump, it's a very difficult line to play when the ball is almost close to that line of outside the line of off stump. And that's good thinking bowling there by the bowler. And that's bowling another one. This is a full set one. Ball is in there, but I think ball will going to disappear into the galleries for a 6. This time batsman just waiting for that one, isn't it? The short pitch delivery, slower one. The batsman just going after that one. Almost that looks like it's going to be a tennis cricketing stroke, isn't it? And almost going back and taken that one into the mid-wicket boundary for a 6. The last time in this over. Dev Pratham bowls. Good line. Again the misfield there by the short mid-off fielder. They're coming back for the second. They complete the couple. So good way to finish. I think Rishabh is the man. He came as an opener for the side, and he is now walking towards the pavilion as unbeaten, and is contributed for the good score. Not a huge one, but I think in that particular score, 46, which is the total score, and he is himself scored 20 runs in just 11 deliveries, and a good contribution here from Rishabh. And now it's a target for team SGM Mavericks is 47, and we didn't see how they will going to get that 47. There's a stipulated 5 overs, and it's going to be very interesting session will go into coming up, because we are first time seeing that both the teams दोनों आरंभिक बल्लेबाज माफ कीजिए टीम मैवरिक्स एसडीएम मैवरिक्स के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं देखना पड़ेगा। 47 ओवर का लक्ष्य तक निर्धारित 5 ओवर में, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज ओपनर्स हाजिम और देवी, जो कि दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं हमसे दूर वाले छोर से। गेंदबाज दीक्षित
और तो दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हाजी हिम्मत सामना करने के लिए तैयार, और टीम एसडीएम मैवरिक्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। दोपहर का वक्त लगभग दोपहर के 2:20 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का प्रकोप अभी भी मैदान पर बरकरार, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी तले इस श्रृंखला का चौथा मैच का दूसरी पारी का पहली गेंद लेकर गेंदबाज फेंक चुके हैं। इस वक्त लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका। टीम एसटीएम मैवरिक्स के लिए 1 रन 90 रन से नुकसान के लेफ्टी गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज दीक्षित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, सफल होते हुए, लेकिन गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उतना कुछ गेंद ज्यादा उछाल नहीं ली, और गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर जारी। 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पावर प्ले के अंतर्गत सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और अजीम एक बार सामना करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद। बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। जहां तक 47 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है जो टीम सम्राट ने तय किया है, टीम एसडीएम मैवरिक्स को चाहिए एक बेहतर आरंभिक शुरुआत। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद पटकी हुई गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद अपनी दाईं ओर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। थ्री विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और जहां तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दीक्षित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। देवी इस वक्त सामना करते हुए ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just swings that one in a style and finds the gap as well in between deep fine leg and the deep backward square leg, and because of that has got a boundary for that. Fantastic struck came from the bat of Devi, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। शॉर्ट गेंद थी, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त उछाल दिया था खूबसूरती के साथ देवी ने चौके के लिए। और एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और विकेट कीपर कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। और जहां तक का सवाल है इस वक्त मिड विकेट और स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा स्ट्रेटर वर्जन पर इस वक्त तैनात किया गया है। बाएं हाथ के माफ कीजिए बाएं हाथ के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार इसको इनसाइड एज ऑन दैट, इसको इनसाइड एज ऑन दैट, लेकिन गेंद इस वक्त विकेट कीपर के आगे टिप्पा खाते हुए। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन बल्लेबाज को मिले 1। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान लगाया तो उतनी ज्यादा उछाल नहीं ली। बल्ले का भीतरी किनारा टकराया जरूर, लेकिन विकेट कीपर के आगे गेंद टिप्पा खाते हुए। लास्ट 2 बॉल, 2 गेंदें इस वक्त बाकी, और दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार टॉप एज, चांस फॉर द डीप विकेट फील्डर, गेंद के नीचे आते हैं लेकिन नहीं, he just played that one with the wind and he's got the maximum for that. Absolutely fantastic struck. हवा के रुख के साथ इस स्ट्रोक को खेला था, और जिस तरह से वृक्ष के इस वक्त डाल के पत्ते यहाँ पर लहरा रहे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हवा का रुख मैदान की दाईं से बाईं हो रहा है।
तो ही जस्ट प्लेड दैट वन विद अ विंड एंड इज गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर हसीम के बल्ले से लगता हुआ। और इस बीच दीक्षित एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा, इसको बॉर्डर में ऑन दैट निशाना इस वक्त टकरा चुका है स्टंप्सों पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 47 in 5 overs and this is an absolutely fantastic start for team STM Mavericks. They managed to score 14 runs on the board after completion of first over. Let's straight away coming back to the equation. 47 minus 14, that means 33 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. And straight away the required run rate is now coming down to exactly 8.25 runs per over. पारी के शुरुआत पर रिकॉर्ड रन रेट चाहिए था 9.40 रन प्रति ओवर। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब 14 रन बच चुके हैं रिकॉर्ड रन रेट उतर कर आ चुका है 8.25 रन प्रति ओवर। तो यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत दोनों आरंभिक बल्लेबाज दे चुके हैं टीम एसटीएम मैवरिक्स के लिए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अभिषेक का इस बीच गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर तैयार अपने कोटे की। और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज देवी। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरत He's hit that one with a flatter version with a twisted bat. This is an absolutely fantastic strike. और देखिए गेंद ऑफ स्टंप पर आई थी और इस तरीके से उन्होंने बल्ला घुमाया था रिवर्स शॉट के जरिए मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद सीधे बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। It's 20 without loss at the start of the second over. गेंदबाज अभी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव उनके ऊपर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, प्रोटेक्शन मौजूद, रक्षण मौजूद, रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 without loss in the over number second in progress. Good progressing here for team STM Mavericks. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो अभी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई और जब तक गेंद शॉट कवर पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर धीरे धीरे यह साझेदारी इस वक्त क्रीज पर जमती हुई और यह साझेदारी जो कि खतरा पैदा करती हुई टीम सम्राट के गेंदबाजों के लिए। और फिर से एक बार अभी दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर और एक रन मिलेगा। इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था, स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद इस वक्त खेला वाइड लॉन्ग ऑफ पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। It's 22 without loss in the over number second in progress. Fantastic progressing here for team STM Mavericks। और गेंदबाज अभिषेक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बॉल्ड आउट। He just played that one in a sloppy style. And this time he paid the penalty for that. गेंद लगभग सीधी रफ्तार के साथ थी, तिरछे बल्ले के साथ रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे स्टंप्सों पर जा टकराती हुई, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर गया। तो आउट होने वाले बल्लेबाज देवी 11 रन 10 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और पहला विकेट खो चुका टीम एसटीएम मैवरिक्स 21 रनों के ऊपर। It's 21 for 1। टीम रियल फाइटर्स द्वारा आयोजन किया गया हुआ इस श्रृंखला का मैच नंबर 4 इस वक्त प्रगति पर। फाइटर्स ट्रॉफी 2023 के नाम पर यह श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए और इस बीच नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल प्रसाद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
अभिषेक की गेंदों का। दाईं हाथों पर द विकेट, अभिषेक की गेंद प्रसाद के लिए हल्के से गेंद को इस वक्त पुश करना चाहा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सिलिमिट ऑन पर पहुंची और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 21 runs on the board. 7 runs came from this over. Good over in Team Samraj's point of view came to an end. 1 wicket lost in this over for Team STM Mavericks, and after 2 overs, the equal battle is now on. 21 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. 26 to get from remaining 3 overs. That means in 18 deliveries. जहाँ तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, it's going to be 50-50 at this situation. 22 in fact the score, I beg your pardon. 22 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. 25 to get from remaining 18 balls. दीक्षित अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए, पहले ओवर में 14 रन प्रदान करने के बावजूद उन पर इस वक्त विश्वास रखते हुए उनके कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी है दीक्षित के हाथों में, और देखना यह है कि वे अपने कप्तान के विश्वास को किस तरह निभा पाते हैं। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर से ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, 4 खिलाड़ी भी इसके दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट फाइल लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, और पहली गेंद ये गया, ओह जस्ट गॉन फॉर अ माइटी स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली, मच स्ट्रेट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार दीक्षित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है, मिड विकेट पर फील्डर के लिए मौका, और इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट हिट दैट वन बट नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपनी दाईं ओर तोड़ते हुए इस कैच को लपका 7 से 8 कदम फील्डर ने सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सेकंड विकेट लॉस्ट फॉर टीम STM Mavericks, and now they are 22 for the loss of 2 wickets. Sahil, the number 4 batsman, is now coming out to the middle with lots of responsibility, और एक रन के अंतराल में 2 विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। टीम क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज इस वक्त नए, प्रसाद और साहिल क्रीज पर मौजूद, दोनों आरंभकार हाजिम और देवी इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके 1 रन के अंतराल में, और इस बीच गेंदबाज दीक्षित की गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, एंड द बैट्समैन जस्ट वांटेड टू गो फॉर अ माइटी, ही हैव नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद पटकी हुई गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद उनके शायद शरीर पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फीट हो, आई थिंक इट्स गोट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 now for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. 24 more runs now they have to score for victory, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दीक्षित तैयार, just wanted to turn it away, and luckily for the batsman the ball went just over the stumps, lucky escape, और यहाँ पर गेंद कुछ हद तक स्टंप से ऊपर निकली थी, इस वक्त पूरी तरह बीट हो गई, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई, और इस बीच एक बेहतर गेंद इस वक्त दीक्षित फेंक चुके अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, इट्स ऑफ द बैट, एंड fantastic over came to an end from Dixit after conceding 14 runs. He conceded just 3 runs. In fact, he conceded just 3 runs in this over. और पहले ओवर में 14 रन प्रदान करने के बावजूद कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी सौंपी थी दीक्षित को, और उस कप्तान के विश्वास को उन्होंने निभाया है दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन न प्रदान करते हुए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 24 रनों पर। It's 24 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs, and 23 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs.
And straight away, the asking run rate is now gone up to exactly 13.5 runs per over. 11.5 runs per over, the required rate at this situation. 23 they have to score in the stipulated in their remaining 2 overs. In fact, Srijan starts the fresh proceedings from the commentator box and और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो प्रसाद के पास इस वक्त स्ट्राइक और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए निस्संदेह इस वक्त चौके और छक्कों की सख्त जरूरत यहाँ पर टीम एसटीएम मैवरिक्स के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए. और पहली गेंद लेकर सृजन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद उछाला, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, आसान सा कैच लपकते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है प्रसाद के रूप में. विकेट नंबर 3 हैज बीन बैक इनटू द पेविलियन एंड नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल. इट्स 24 for the loss of 3 wickets. 23 to get from 11 balls now. So Nihal, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. और सृजन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अगली गेंद सृजन की. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी, अवसर से थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 10 गेंदें बाकी, 23 रन चाहिए. 23 runs to get from remaining 10 balls. The equation seems to be stiffer now for team STM Mavericks. और गेंदबाज सृजन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फुल लाइन डिलीवरी. गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूके और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. तो निहाल इस वक्त स्ट्राइक एंड पर और मैदान के दाईं और एक्स्ट्रा कवर पर जो टीम रियल फाइटर्स का बैनर जो कि दिखाई दे रहा है, फ्लेक्स दिखाई दे रहा है, उस फ्लेक्स पर अगर निहाल छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार सिर्फ निहाल को दिया जाएगा. ये गेंद इस बार वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन और ये इनाम सिर्फ निहाल के लिए घोषित किया गया है. अगर एक्स्ट्रा कवर पर टीम रियल फाइटर्स का जो फ्लेक्स है वहां पर वो छक्का लगाते हैं और जाकर अगर गेंद टीम रियल फाइटर्स के फ्लेक्स पर टकराती है तो 500 रुपए निहाल प्राप्त कर सकते हैं. और देखते हैं वो छक्का लगा पाते हैं या नहीं उस फ्लेक्स पर. तो इस बीच 1 रन बना पिछले गेंद पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. 3 विकेट के नुकसान पर. इट्स 25 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. 8 balls left. 22 runs more now they have to score for victory. सृजन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज फील्डर लंगॉफ के नीचे आते हुए कैच को छोड़ दिया इस वक्त और इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा रनआउट के खतरे से भी बच चुके हैं. आसान सा मौका यहाँ पर गंवाते हुए लंगॉफ के फील्डर और उनकी इस गलती की वजह से बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. $27 now for the loss of 3 wickets. 7 balls left. 20 runs required. 20 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो सृजन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए और सृजन की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई
और बल्ला ऊपर से हटा गया, गेंद नीचे रहते हुए आखिरकार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो चौथा ओवर पूर्ण हो चुका है। 4 overs completed, 27 runs on the board. Still the batsmen of team STM Mavericks searching for the right track. 20 runs required from last over. 20 रन चाहिए अंतिम ओवर में। और अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम STM Mavericks को सिर्फ चौके या छक्के ही अब इस मैच में विजय दिला सकते हैं। तो कुछ बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज अब है इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ टीम STM Mavericks के बारे में। 20 runs required from last over. तो इस वक्त पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अभय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 20 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए। पहली गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड लेकिन इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचे 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रन्स टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज नाउ। तख्ता अभी भी भारी लगता हुआ टीम सम्राट का और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अभय सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज साहिल। यह गेंद ड्राइव किया, गेंद को लॉग ऑन पर एक रन का इजाफा, not more than a single. In fact, slight bit of overthrow there, and because of that, the batsman come back with it. Oh, it's going to be more run. They are just 2 रन प्राप्त कर चुके। तीसरे रन की भी संभावना वहां पर थी, लेकिन बल्लेबाज रन पूरा करने के बाद काफी आगे निकल चुके थे, तो इस वजह से तीसरा रन उन्हें नहीं मिला। तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 29 नाउ। 30 द स्कोर। फुल टॉस, लेकिन गेंद का फायदा उठाने में असफल। नॉट मोर देन अ सिंगल। 31 नाउ। 16 to get in remaining 3 balls. 3 balls, 16 runs. They have to score for victory. Antim Mauka, the last chance in front of the batsmen of a team STM Mavericks. Lofted, and he just keeps the hopes alive. Huge one. And now 10 required of 2 balls. Fantastic struck came from the bat of Nihal. He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over log on fence for a huge one. 2 गेंदे बाकी, 10 रन चाहिए। एक और चौका या छक्का STM Mavericks को इस मैच में बरकरार रख सकता है। और 2 गेंदे 10 रन चाहिए। अब स्ट्रेट अवे दबाव गेंदबाज के ऊपर। देखना ही है कि छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर वो क्या करते हैं, किस तरीके की गेंदबाज यहां पर अपनाते हैं। 10 रन चाहिए, 2 गेंदे बाकी। निहाल सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करने के बाद अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज कुछ खास दिलचस्पी नहीं लिया दूसरा रन लेने में। 1 रन। अब अंतिम गेंद और 9 रन चाहिए विजय के लिए। अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहां पर टीम सम्राट की विजय निश्चित है। टीम थंडरबोल्ट्स ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, has got a single for that. In fact, it's a no ball. So free hit in the last delivery. लेकिन अब रन से चाहिए 7 रन चाहिए अंतिम गेंद में। अगर अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हैं तो मैच टाई हो सकता है। और खुशी की बात यह है कि ये बल्लेबाज के लिए फ्री हिट गेंद है। तो यहां पर देखते हैं अंतिम गेंद पर छक्का निहाल लगा पाते हैं या नहीं।
तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, अंतिम गेंद लेकर दाहिना तो पर विकेट झुके। और इसी के साथ ये मैच रोमांचक तरीके से 6 रनों से जीत चुका है टीम सम्राट। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता निहाल ने, लेकिन बल्ला ऊपर से हटा गए, गेंद नीचे रहती हुई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। सो 6 runs, thrilling victory for team Samrat against team SDM Mavericks, and with that 6 runs thrilling victory, they back the complete points. So the next match, team Thunderwolves will take over team MPC. Team MPC after World Toss, they elected to field first, and that match starts within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त शाफी परपुंजा के साथ, जब अगले मैच की यहाँ पर शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಫ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಬೌಂಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇದು, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಡೆತ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರು 2ನೇ ಚೆಂಡು, ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಲು ದೂರ ಹೊರಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದು, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಸೋಲುವಂತಹ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ಭೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲು ಸುಂದರತೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್. ನೀಡಲಾದ ವಿಡ್ತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದ ಬೌಲರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆದ್ರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಂತ್, ಯಾವ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಗುರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹೈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ. 5 runs ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 4. 5 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗ ಗುರು 2 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಬಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 17 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್, ಸೊಗಸಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮಗದೊಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು. ಗುರು ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಅತುಲ್.
3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳಿದೆ. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಪ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಅತುಲ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಸ್, ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಗುರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಗುರು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಸಾತ್ವಿಕ್ 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಇಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುಬಾರಿಯುತ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಗುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತಂಡ. ವುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಳಿಗಾರ ನಿರಂತರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇತರೆ ಓಟದ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಗುರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲು ದೂರದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ನೋ ಬಾಲ್ 2 ವೈಡ್, 2 ನೋ ಬಾಲ್ 4 ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಫ್ಸ್ ತಂಡ. 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಹಾಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಡ ಕೂಡ ಸೌರವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಆಟ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಳಿಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2.4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅತುಲ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಗುರು ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಗುರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ದಂಡನ್ನೇ ಬೀಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ತಂದಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸುಲಭದಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗುರು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಗುರು ಅವರ ಈ ಚುಟುಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಹಡಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೌರವ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 25 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of the second ball in the second over. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಇದು ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲಂತಹ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತ ಇದು ನಿಹಾಲ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳಿದೆ. ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದರ್ಶನ್ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಹಾಲ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ದರ್ಶನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2ನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 6 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ದರ್ಶನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ನಿಹಾಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. Another chance. What a reply from the bowler. What a reply this is. 6 in the previous ball, wicket in the very next ball. A superb comeback this from the bowler. ನಿಹಾಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ and after the end of the second over is 31 on the board for the loss of 2 wickets. ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್. 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗುರು 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ್ರು. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗೆ ಅತುಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32.
ಶ್ರೀಜಿತ್. ತಂಡ ಬಯಸಿದಂತೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಜಿತ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತುಲ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 4. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಶಫಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಅತುಲ್. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಅ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 15 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 38 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್, ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ದ ಬೌಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. 38 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕೊರಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಹಾಲ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 38 ಓಟಗಳಿದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು 2.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳಿದೆ. 38 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗನ ಕಾಲಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ನಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೂಡ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 39. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ 3rd ಓವರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಜಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 3rd ಓವರ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು, 40ಕ್ಕೆ 3 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ 39 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. On the board after the completion of the 3rd over. 39, sorry. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಹಾಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರೀಜಿತ್.
ನಿಹಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಜಿತ್. 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಲು ದೂರ ಧಾವಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು ದಾಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸೋದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಬಳಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಶಾಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಲೋ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಜೋಡಿ ಅನ್ವಿತ್. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳು. 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಈ ಒಂದು ಎಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಸ್. ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರೀಜಿತ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸೌರವ್ರತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಓವರ್. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತ ನಿಹಾಲ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಆದರೆ ಶ್ರೀಜಿತ್ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳ ಮಧ್ಯ ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ. ಹೈ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನಿಹಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಫೈರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. 1.5 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ನಿಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 6ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 4th ಓವರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಓವರ್. ಚೆಂಡನ್ನೇ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರವಣ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಹಾಲ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. 2 overs, 9 runs and 3 wickets. Absolutely fantastic bowling performance this is from Nihal. 2 over, 9 run, 3 wickets ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ವ್ಸ್ ತಂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ವ್ಸ್ ತಂಡ ಯಾವಾಗ ಗುರು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕುರುಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ್ ಜೋಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50ರ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲರೆ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ನೀಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿಹಾಲ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶ್ರವಣ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ತಡವಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 42. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1.3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 17 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 11 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಿತ್ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್ ಅವರಿಗೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. 2 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 44 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಓಟಗಳು. 50ರ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ 1 bounce, 2 bounce over deep mid wicket for 4. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ 2 ಓಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49 ಓಟಗಳಿದೆ. 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅನ್ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 49 ಓಟಗಳಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ವಿತ್. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಅ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್? ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಿಟ್ ಅ ಬಿಗ್ 6? ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ವಿತ್. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 6 ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. What a dramatical end to the innings. 6 from the blade of Anvit. 55 on the total of Team Thunder Wolves. 56 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 56 is the winning target here for Team Thunder Wolves.
30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಹೆಸರಾಂತ ಧ್ವನಿಯು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ the captain Saurav, and the batsman is in non-striker Zen. And the previous match, one who played a fantastic knock for his team. Now we need to continue that start in this particular match, because 56 is going to be a huge total to chase down, but not impossible in cricket, especially in this format of game. I think anything can be possible. Shravan, first ball. Right arm over wicket, straight to the hands of short mid off. It's a dream start. It's a dream start here for team Thunder Wolves. Absolutely, they got a big fish in the net. Of course, that was a hittable delivery, isn't it? Ball is in the half volley, but just talking about the stroke which is played by Saurav, I think he just played that one in a flatter version. And certainly when you're playing that kind of wicket stroke in the power play, it's definitely asking for trouble. Slight a bit of lofty stroke we wanted to get if we wanted to clear the infield, but he's played that one straight to the hands of short mid off, and short mid off fielder making no mistake at all. Huge success for Shravan. The danger man departs, and the Saurav, the captain of the side, without disturbing the scoreboard, he's just back into pavilion. The new batsman just walking towards the middle in the place of Saurav Nihal. But Shravan has got a dream start. Right arm over the wicket bounce. Beautifully bowled. Absolutely perfect one. And that's a very good delivery indeed, isn't it? Whenever you are getting a wicket in the first ball, you are definitely looking at a different bowler, isn't it?
The level of confidence absolutely very high, and because of that extra confidence what bowler is getting, the very next ball is almost forcing the batsman onto the back foot with the beauty of the delivery, and batsman unable to play that one properly and missed it completely. Right arm over the wicket, pulls that one, but just over the top of the infield. There is a fielder in the deep mid wicket, will go into cut it up. Of course, the square fielder, in fact, running back, and managed to field the ball down at deep square leg region, and ample time for the batter Nihal to complete that couple of runs. Not that much of shot enough for the batter to play that full shot, but he's managed to get that one over the top of the infield, and so that they completed a couple of runs. Two without loss of any wicket, two for the loss of one wicket in the over number first is in progress. So next match, Team Avishkar will going to take challenge from Team SDM Mavericks, so that both the captains are here for the tossing ceremony. And meanwhile, one more wicket is back into pavilion. This is going to be a dream stop provided by Shravan. The second wicket is back into pavilion. Absolutely, it's going to be a disaster start from the batters of Team MPC. Whenever chasing a total like 56 to win this match, 2 balls remaining in this over. Whenever chasing a big total like 56 to win the match, so 56 when you're chasing a big total, they need to have some good start, isn't it? We are talking about that taking advantage of the power play over is so important. But here we can see that Shravan is not really allowed the batter to settle down. 2 wickets so far in this over. Right arm over the wicket to Karthik. Karthik this time slide a bit of across the line, try to hit the ball mid-wicket region, but this time he's played that one around the ground towards the mid-wicket region. He's off the mark with a single, and Skobar Namozan to 3 on the board for the loss of 2 wicket. Karthik is off the mark, and Sai Darshan is the one. He's got a potential of changing the complexion of the game, and now it's a lot of responsibility in his shoulder after losing his captain, after losing the one more wicket in this over. It's all up to this man. Oh, lovely shot, squad, a beautiful square cut, absolutely delightful stroke, and this is one of the technical cricketing stroke. As the day number 1 is concerned, the way that the batsman off the back foot he played that one, it just shows that how the batsman is technically sound. It's not an easy stroke to play in the books when you're playing the cut shot, but only the technically sound player can play that kind of cricketing stroke off the back foot. Cuts that one, he cuts the ball just like he is cutting the wood from his axe, and he played that one quite beautifully. And one more boundary, and with that boundary, Skobar Namozan to 7 on the board. 7 for the loss of 2 wickets. Even though they lost 2 wickets, but because of that boundary in the last ball of the over, slight a bit of comeback here for MPC, but not totally, because asking run rate is always going to be a big challenge here. 56 which is the target, 9 which is the total, 8 which is the total score. That means another 48 runs required for the victory. 48 runs required from 4 overs. That means 24 ball and 48 runs required. And as far as the asking run rate is concerned, it's exactly 12 runs per over. And now onwards, each and every ball required couple of runs. The bowler is introduced from the far end. Anvit, bowler, going to bowl the second over. After the power play, we can see that fielding restriction is over. 5 fielders straight away in the boundary line. First ball, warm-up delivery of the afternoon, which is gone far away outside the line of off stump. No hesitation there from umpire to signal the white, and with that extra score, Namozan to 9.
Correction, 8 on the board. 8 for the loss of 2 wickets. Full toss, lofted, and a mistimed full shot, but quite enough for him to get the boundary. Even the not fully controlled full shot here from the batter, because that is a juicy full toss. It not came from the sweetest part of the bat, but anyhow it's quite enough for him because of the hardness of the ball. Takes the ball into the fence, 1 bounce. So with that boundary, scoreboard jumped into 12. This kind of brave and gutsy batting, which is badly required here for MPC if they wanted to back in the game. Anvit, back to his bowling mark. Right arm over the wicket. Using his feet, lofted at one. Handsome, high and handsome. Absolutely, it's a glorious shot, isn't it? Just using his feet, and bowler tried to bowl the slower one, but batsman just waiting for that slower one, and he played that one quite beautifully. It's not an easy stroke to play in the book when you are coming down the track. When the bowler bowling a slower one, you need to adjust your stroke. But here's the batsman Karthik is did that. He's just waiting for that. He's not trying for the stroke where he wanted to get, but he's just wait for the ball to coming to his bat, and then he dispatches that one down to deep long on for a 6. So with that 6 score, jumps into 18. And with this, under pressure now. Beautiful shot. That was a technical cricketing stroke there from Karthik. The fumble from the fielder. The opportunity for the fielder, batsman to come back for the second. And they completed a couple of runs. Good running between the wicket. Positive cricket is going on here for MPC. Even though they lost 2 wickets in the first over. But they are trying their level best. And especially the Karthik taking the initiative of getting some acceleration in the run rate. Scoreboard now moves on to 20 on the board. 36 more runs required for the victory. Anvit again from the far end. Right arm over the wicket to Karthik once again. This is a huge one. This is a monumental. This is a lot more better than the previous 6, I want to say, because there is enough room for the batsman to freeze his arm. Short pitch delivery, slide a bit of outside the run of off run, but batsman already is just premeditated. That is just wanted to dancing down the track. And right from the middle of the bat, absolutely played that one right from the middle of the bat. Instrumental sound came from the bat, indicating that timing is so sweet. With that 6 scoreboard numbers under 26. This is one more. He's on fire. He's unstoppable. Karthik is on fire. 3 sixes in this particular over. What a fantastic struck. Still one more delivery remaining in this over. (32), which is the total score. 34, which is the required run. Because 24, which is the required run. And this is absolutely comeback over for MPC. What an expensive over so far from Anvit. Bowling right arm over the wicket. This is a pressure. This is absolutely a sign of the pressure. Umpire unmoved. Dotted delivery call by umpire. That's the end of the over number 2. After completion of over number 2, total score is 32 on the board. That means in the remaining 3 overs, they need to get another 24 runs to win this match. Now, equation is very easy, isn't it? Before the start of the second over, the required run is exactly 12 runs per hour. Because of this expensive over, which is bowled by Anvit, straight away, the run rate required is coming down from 12 to 8. Because now 24 runs required for the victory in the remaining 3 overs. This is the beauty of cricket, especially when coming to the shortest format of the game, like 5 overs. 1 hour, which is quite enough for chasing team to back in the game. And they're choosing Anvit to get some acceleration, especially the man behind the success is Karthik, who hit 3 massive sixes, and he's just changing the complexion of the game. But match which is not yet over, but 24 still they need to get
at the required rate of 8 runs per over. The team Thunderbolts may be looking for one good over, but sensible batting which is required here from these two batters in the middle. This time, the batter Sai Darshan is doing a right job here. You know exactly, Karthik is a man, he's in a terrific touch. Why not to pick the single, and I wanted to give the strike as much as possible to Karthik to deal with the big shots. But here is more than the big shot. I think the sensible batting which is required here for MPC after getting such a good position. They doesn't want to lose the momentum, and if team Thunderbolts wanted to back in the game, they need to break this partnership, unless it's very difficult for them to win the match. Right over the wicket, Karthik. Full toss, top edge, opportunity. No one there. The bowler himself running towards the catch, and he completes the catch. This is a disaster dismissal, I want to say, because the juicy full toss, isn't it? He hit some good deliveries into the fence. Whenever he got a loose delivery, he got out. This is going to be a slight bit of unfortunate as well as a disappointment for the batter, isn't it? This is the beauty of cricket. Sometimes you won't get wicket for the good deliveries, but if you have a luck enough in your favor, you will get the wicket for the loose deliveries. This is a juicy full toss on the around the legs of the batter. He can hit the ball out of the park if he able to hit that one into a mid-wicket or square leg region. Because of his half-minded, because of the condition of the game is forcing him to play slight bit of a defensive frame of mind, and he just pays the penalty for that. This is a huge wicket, I want to say, for Thunderbolts, because the man who really changed the complexion of this game is back in the game, back in the pavilion, and the new batters walking towards the middle with the jersey number 6. Prateek is the new batter. And wait and see how Prateek will going to contribute. Can he able to fill the place of Karthik, one really damaged? Intelligent cricket, sensible cricket here from the new batsman. You know exactly that on the other side we have the very, very talented Sai Darshan. So why not to pick the single line? Wanted to give the strike as much as possible to Darshan. Now all up to this man, Sai Darshan. How well you going to handle the pressure? We are talking about sometimes the cricket is a game of maybe the physical game, but more than anything else, I want to say, sometimes your mind will going to be the key for the success of winning the matches. Right arm over the wicket, again drags the ball. It's not quite technical cricketing stroke, I want to say. He wanted to play that one in the offside region, but adjusting the stroke last moment because the bowler bowled the slower one, so batsmen have to play that one down to deep long on region for a single. So far it's a very good over from Shawan. Bowling away from us. Right arm over the wicket. To protection. Oh my goodness. He wanted to play the switch it. Wicket keeper is not really ready there. Behind the stump. He missed it. And batsman crossed off for a single. So with that single, scope moves on to 36 on the board. That means another 20 runs required for the victory in 13 deliveries. So far it's a very good over from Shawan. The kind of over which is badly required for Thunderbolts. Oh, what a good run. Absolutely perfect one. Sharp incoming delivery, but a slight bit of excitement rather than the confidence. It's all happening when you wanted to get the wicket off the batsman like Sai Darshan. The wicketkeeper slight a bit of excited and to get the result in his favor, but umpire very much sure that ball misses the bat. Good over from Shawan. 2 overs remaining. 20 runs required for the victory. 10 runs per over which is required run rate. 20 required from 2 overs. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But this is going to be very crucial. Now for this a very important over, the captain of Thunderbolts brought Sanath into attack. Now Sai Darshan having some conversation with his partner Prathvesh about the strategy, about the game plan, because they knows that 2 big shots is quite enough out of 12 deliveries for them to win the match.
Rotation of strike. Along with the rotation of strike, choosing one or two deliveries to get the big shots is quite enough for MPC to win the match. But at the same time, Thunderwolves, they knows that the 20 to get from 2 overs, it's manageable for the opposition. They need to get one good over here. This Sanath balls, batsman pulls that one, but not quite able to get that one middle of the bat. Just a single, he couldn't manage to defeat that infield. With a single, scoreboard numbers on to 37. 19 to get from 11 balls. Sanath having a lot of responsibility in his shoulder. Even Sai Darshan. This time again wanted to pull that one again. Not quite getting hold of that one properly. Of course, it's short pitch, but not short enough for Sai Darshan to pull that one properly. 2 balls and 2 singles. Sanath will not going to bother about the single. You know exactly the need to prevent the big shots like bounties and sixes. But single will not going to help the opposition team. Sanath balls. This time across the line. Going for the big swing of the bat. White call by umpire. This is a bonus run. This is a bonus run here for MPC. 2 runs been added to total. Scoreboard numbers on to 40 on the board. That means 16 more runs required for the victory. Left arm bounce. Pulls that one. And that's going to be a maximum. Absolutely phenomenal cricketing stroke, I want to say. The way that Darshan tricks his position very quickly and picking up the line and the length so quickly, and scoreboard scoreboard numbers on to 46. That means 10 runs required for the victory in just 9 deliveries. That 6 brought MPC strongly back into the game. This time, top edge, the fielder is underneath it and he takes a catch. Once again, match is slight a bit of turning around. Once it looks like after Sai Darshan hits 1-6, it's going to be so easy for MPC to win the match. But immediately after the very next ball, Sanath has got the wicket of Sai Darshan. Controlling your emotion is so important after you getting a 6. The very next ball, always the bowler trying for the wicket. And that time if you wanted to go for the big shot, the bowler always going to be the winner, because you know exactly what batter will going to do and you know exactly what kind of comeback which is required. After that he conceded a 6. The very next ball, Sanath slight a bit of shortening the length, seeing that batsman coming down the track. And Sai Darshan couldn't manage to take that one from the middle of the bat. And comfortably taken there by the fielder in the deep mid-wicket region. Now 10 more runs required for the victory. 8 balls remaining. Sanath. This time full toss. Thank you very much. Thank you very much, said by the batsman Adarsh, because it's absolutely juicy full toss. This is not a kind of delivery which the new batsman expecting from the bowler. Maybe expecting some good delivery, Yorker length delivery. But this time the juicy full toss here for the batter Adarsh, and he's just dispatching that one quite easily down to deep long on for a 6. Now just 4 runs required for the victory. Sanath. Bounce, he finished the match in a style. This is a huge one. This is a biggie. One of the longest 6 I want to say in the day number 1. I want to say, as per that we are not having to calculate the distance of the 6s. Maybe it was more than 80 to 85 meters. That ball is travels, and a huge 6. So MPC registering their first victory in a dramatical manner, because 56 everyone thought it might be quite enough for the team Thunderwolves to win this match. But a man who is changing the complexion of this game is Karthik, I think so, who is just brought the momentum in the second over when hitting at 3 sixes in that over, and makes the thing so easier for incoming batters. And now it's the time to announce the man of the match.
धन्यवाद सतीश। सो द मैच स्टार्ट्स, फर्स्ट बॉल, इस बार गेंद को पुल कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। और मैच इस वक्त शुरू हो चुका है टीम आविष्कार और टीम एसडीएम मैवरिक्स के बीच। और टीम एसडीएम मैवरिक्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज जेसन और आदर्श इस वक्त मौजूद। आदर्श पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं और जेसन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। देवी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उछाला इस वक्त, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान कर। जहां तक टीम आविष्कार और टीम एसडीएम मैवरिक्स का सवाल है, दोनों ने अपने पहले मैच में दोनों ने पराभव का सामना किया, तो इस मैच में अपना पहली विजय दर्ज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए इस वक्त ने विजय देना जरूरी है, विजय मिलना जरूरी है। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन बिना किसी नुकसान के। जैसा कि मैं फरमा रहा था, इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीम अपने पहले मैच में हार चुके हैं। टीम आविष्कार ने हार का सामना किया था टीम तुलना टाइगर्स के खिलाफ, और टीम एसडीएम मैवरिक्स के खिलाफ टीम सम्राट ने विजय दर्ज की थी। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद जरूरी बन चुका है। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर, इट माइट बी कट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस ऑफ द टॉस, गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज जेसन काफी आगे निकला है, और आखिरकार कोई मौका उन्हें नहीं था क्रीज पर, अपने क्रीज पर नॉन स्ट्राइकर पर वापस लौटने का। और हालांकि थ्रो पहुंचा था विकेट कीपर के हाथों में जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करने के बाद थ्रो कर दिया इस वक्त गेंदबाज के हाथों में, और आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइकर पर होता हुआ गेंदबाज द्वारा। और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और पहला विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। धीरज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में असफल, लेकिन यहाँ पर गेंद विकेट कीपर के साथ साथ थर्ड मैन फील्डर को बीट करते हुए निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बाई के रूप में 4 रन यहां पर दर्ज हो चुका है, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, टीम आविष्कार made a pretty good start, in fact, except they lost their 1 wicket, they managed to score 12 runs on the board after completion of first over। और निश्चित रूप से यहां पर इस वक्त एक बेहतर शुरुआत कर चुका है टीम आविष्कार। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से, यानी उस छोर से गेंदबाज प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ टीम आविष्कार की पारी में। और जहां तक इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला का सवाल है, टीम रियल फाइटर्स ने इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है फाइटर्स ट्रॉफी 2023 2023 के नाम पर। और निस्संदेह यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई, शाम के 4 इस वक्त बज चुके हैं। धूप का प्रकोप जरूर मैदान पर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है, और कुछ हद तक गर्मी का एहसास खिलाड़ी और दर्शक यहाँ पर दोनों करते हुए। और इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के अंतर्गत छठा मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ। 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से
प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त धीरज सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक डाउन, ओह फंबल एंड दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। आसान सा फील्डिंग था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें उन्होंने हटा ली तो गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे जाकर टकराई वाइड स्लॉग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, सीमा रेखा के दीवार पर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर शुरू हो चुका है और प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एंड ही गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट। दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्रोक came from the bat of Dheeraj. He just got that one right from the middle of the bat and scooped it in a style into the wicket gap between long on and deep mid wicket, and he's got a boundary for that stroke. Fantastic stroke और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए टीम एसडीएम मैवरिक्स के कप्तान लगॉन पर अब एक फील्डर को तैनात किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक और गेंद शायद वहां पर सीमा रेखा के अंदर जो पत्थर है वहां पर टकराने के बाद वहां पर अपने रफ्तार को खो चुकी है, वरना निश्चित रूप से ये गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी। तो यहां पर रन से मिले सिर्फ एक बल्लेबाज के लिए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जरूर हुई थी लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज धीरज अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सुरक्षित सफल और सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर उनके खाते में जुड़ता हुआ 21 रन 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रसाद अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार दिस इज गॉन, आई थिंक नो इट माइट बीन कंसीडर्ड, इन फैक्ट टेकन ब्रिलियंटली जस्ट इनसाइड द फेंस। तो यहाँ पर उछाला था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अगेंस्ट द विंड ही जस्ट प्लेड द स्ट्रोक और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए डीप मिड विकेट पर निहाल जो फील्डर थे उनके हाथों में गेंद पहुंची और अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने रखा और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज आदर्श आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं और दूसरा विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम आविष्कार और नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। सोमशेखर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। स्कोर इस वक्त 21 रन 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज प्रसाद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड पर वोंट गेट इट और आखिरकार दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ संतुष्ट हो चुके और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 50 के आसपास उनको पहुंचना होगा। अपनी टीम के आंकड़े को 50 के आसपास पहुंचाना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा लक्ष्य यहां पर प्रदान करना है टीम एसडीएम मैवरिक्स के लिए। और कोशिश में इस वक्त बल्लेबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट और मिड ऑफ पर गेंद पहुंची और आखिरकार इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और एक्स्ट्रा कवर पर मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती यहां पर नहीं की। तो विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। Over has been completed. 2 overs completed, 22 runs on the board, and 3 wickets lost for team Avishkar. Still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in their innings. तो जहाँ तक सवाल है 8 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और चार टीमों के 2 गुटों में ये 8 टीमें बांट दी गई हैं। 8 teams divided in 2 groups और हर ग्रुप से
पहले 2 स्थान प्राप्त करने वाली टीमें इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करेंगी और कल रात को अंडर फ्रंट लाइट प्लेऑफ और इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाएगा। और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तुष्वित नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। सामना इस वक्त करते हुए सोमशेखर, गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त देवी प्रथम और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी शुरू करते हुए देवी फील्ड पे कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज देवी और सोमशेखर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शॉर्ट फाइनल फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है और इस बीच गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार रिवर्स शॉट लेकिन सीधे गेंद पॉइंट फील्डर के हाथों में। रिवर्स शॉट खेलना चाहा था लेकिन खेल नहीं पाए ठीक तरह से और गेंद टॉपेज पर टकराने के बाद पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में गेंद पहुंची और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका। विकेट नंबर 4। अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम आविष्कार की पारी कुछ हद तक लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर 4 अपने बहुमूल्य विकेटों को खो चुका है सिर्फ 22 रनों पर। निस्संदेह इस वक्त टीम STM मैवरिक्स के गेंदबाज इस वक्त छाते हुए, हालांकि पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए गेंदबाज टीम STM मैवरिक्स के। और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है तो दक्षित का आगमन यहां पर होता हुआ। दक्षित इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 6 बैट्समैन फॉर टीम आविष्कार और वो इस वक्त सामना करेंगे देवी की ओवर की अगली गेंद का। लंबे रनअप के जरिए देवी इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा और पहुंच नहीं पाए। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, हालांकि विकेट कीपर के हाथों से पहले प्रयत्न में गेंद जरूर छूटी लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को अपने आगे की ओर आकर उन्होंने फील्ड कर लिया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो देवी एक लंबे रनअप के जरिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद को इस वक्त कट करना चाहा था ऑफ साइड पर पंजों पर उछलते हुए लेकिन गेंद को ज्यादा उछाल लेते हुए टिप्पा खाने के बाद और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि विकेट कीपर ने तीनों स्टंप जरूर उखाड़ दिए लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 22 for the loss of 4 wicket now in the over number 3 in progress. 15 balls already gone in their innings, already bowled in their innings, and 15 balls have to be bowled in their innings. और यहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो देवी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। वंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद कट किया खूबसूरती के साथ लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर डीप कवर पॉइंट पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 23 for the loss of 4 wicket. Still a testing time continuing here for the batsmen of team Avishkar at this situation. और इस बीच देवी एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची मिड विकेट पर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। इस वक्त थ्रो पहुंच रहा है स्टंप्स पर लेकिन थ्रो इससे पहले की पहुंचे बल्लेबाज तेजी के साथ अपने छोड़ पर वापस लौट चुके हैं 2 रन पूरा करने के बाद। लास्ट बॉल रिमेनिंग और गेंदबाज इस बीच देवी अपनी ओवर की अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तुष्वित इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन एंड he's got the boundary for that. Fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman. He just twisting the bat at the last moment, played a reverse shot. और तिरछे बल्ले के सहारे खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए मोड़ दिया। गली फील्डर की बाईं ओर से डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 3 overs completed, 29 on the board, 4 wickets lost and still the batsmen of
Team Avishka searching for the right track. 2 overs left in overall calculation in their innings. सौरभ गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और चौथा ओवर शुरू होता हुआ टीम आविष्कार की पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए और स्क्वायर लेग पर जो फील्डर मौजूद थे उन्हें इस वक्त तैनात किया जा रहा है गली पर और ओवर की पहली गेंद लेकर इस बीच तो इस बीच पहली गेंद इस बार कट करना है। विकेट कीपर चूक है, गेंद जाते हुए थर्ड मैन की दिशा में और थर्ड मैन पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और आई थिंक इसको बैड ऑन दैट इन द लास्ट मोमेंट। और जहां तक सवाल है विकेट कीपर की गलती की वजह से यहां पर 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस वक्त गेंदबाज सौरभ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस आफ्टर 1 बाउंस हिटिंग द फ्लेक्स ऑफ टीम रियल फाइटर्स। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर मौजूद थे, जीतोड़ कोशिश जरूर की उन्होंने गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पास जो बाहर जो फ्लेक्स है टीम रियल फाइटर्स का, उस फ्लेक्स पर गेंद जाकर टकरा चुकी है एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त दीक्षित के बल्ले से लगता हुआ। तो गेंद इस वक्त खो चुकी है और दूसरी गेंद के इस वक्त अंपायर मांग कर चुके हैं और दूसरा गेंद इस वक्त गेंदबाज प्राप्त करते हुए अंपायर द्वारा। तो स्कोर है इस वक्त 35 रन और 4 विकेट गिर चुके हैं। 5वें विकेट के लिए एक बेहतर साझेदार यहां पर बनती हुई दीक्षित और तशवित के बीच अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इज बोल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता है, चूंकि he's got a gap between his bat and leg and the ball passed in that gap, stuck to his middle stump and his middle stump uprooted. Fantastic delivery from the bowler और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। 35 for the loss of 5 wicket and still in overall calculation it's going to be 9 balls remaining in their innings. और नए बल्लेबाज रिखित का आगमन यहां पर हो चुका है और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सौरभ अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद को खेलना चाहता इस वक्त, चूंकि पूरी तरह गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए गेंद और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 35 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पटकी विकेट कट किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एट लीस्ट अ कपल फॉर दैट। जब तक इस बार खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज अंतिम क्षण में बाल बच चुके हैं। तो थोड़े से धीमे गति से दौड़े थे, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि थ्रो विकेट कीपर के हाथों में पहुंच रहा है। अपने दौड़ के रफ्तार को उन्होंने बढ़ाया और आखिरकार दूसरा रन यशस्वीतम
सफलतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4th इन प्रोग्रेस। नीला बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज सौरभ इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रिकित एक बार फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार। 7 गेंदें कुल मिलाकर अब उनकी पारी में बाकी और सौरभ रिकित के लिए इस बार गेंद को टॉप स्कूप खेलना चाहा, रन आउट आसान सा होता हुआ इस वक्त और आसान सा रन आउट इस वक्त कर चुके हैं गेंदबाज। टॉप स्कूप खेलने के प्रयास में चूके थे और गेंद वहीं पर गिर गई, बल्ले पर ठीक तरह से नहीं टकराई। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने रन लेना चाहा लेकिन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पांस नहीं और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका। विकेट नंबर 6 गिर चुका है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 37 रनों का स्कोर है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स फॉर टीम आविष्कार विद जस्ट अ लास्ट ओवर रिमेनिंग। टीम आविष्कार को कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है और देखना है कि 50 के आंकड़े के आसपास पहुंचने के लिए वो किस तरह का आविष्कार अपनी बल्लेबाजी में करते हैं। तो यहां पर अंतिम ओवर शुरू होता हुआ नबील इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नबील गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ टीम आविष्कार की पारी में। पटकी विकेट टॉप एज लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे, थोड़ा सा मिस जजमेंट और इस मिस जजमेंट की बदौलत बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। गेंद पर पहले पहुंचना चाहा, कैच लपकना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में फील्डर ने भापा की गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने को खुद रोक लिया और गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन गेंद को वंचित करती हुई निकल गई डीप थर्ड मैन पर। 2 रन बल्लेबाज से प्राप्त करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार नबील। ये गेंद बेहतर गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त कवर पॉइंट पर ओवर पिच गेंद पर खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेलना चाहा और यहां पर बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे। दूसरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट खोकर पेविलियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज 1 रन उनके खाते में जुड़ेगा और स्कोर है इस वक्त 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 40 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। For the loss of 7 wickets and now just 4 balls left in their innings. और अगली गेंद लेकर इस वक्त नबील तैयार था। इन हाथों पर था विकेट, ये बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा और यहाँ पर बल्लेबाज ने इंतजार किया कि क्या विकेट कीपर स्टंप्सों पर थ्रो करते हैं लेकिन विकेट कीपर ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहां पर कोई बैकअप नहीं था और आखिरकार बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। फिर से एक बार नबील गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट लंबे रनअप के साथ ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन मच स्ट्रेट लाइन गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके बल्लेबाज और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ स्कोर रुक चुका इस वक्त 40 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। नबील अपनी अगली गेंद लेकर तैयार हाथों पर विकेट फुल टॉस टॉप एज मौका और आसान सा कैच मिड विकेट फील्डर के हाथों में।
फुल टॉस गेंद को इस वक्त स्विंग करना चाहता, ऑन साइड पर टॉपिच पर गेंद टकराई, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और आखिरकार मिड विकेट फील्डर को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई इस कैच को लपकने में। 8वां विकेट गिर चुका है, 40 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट, जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो अब तक एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है नेविल का, जिसमें सिर्फ 3 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और एक विकेट भी प्राप्त करने में सफल। अंतिम गेंद लेकर तैयार, इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आए हैं उनके लिए नेविल। अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त नेविल ने। गेंद तक पहुंचना चाहा जरूर बल्लेबाज है, लेकिन गेंद के पहुंच से बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर, 41 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। नेविल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिड विकेट इनफैक्ट, और आखिरकार एक रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन नहीं मिलेगा। So the innings is up. Their stipulated overs are completed. They managed to score 42 runs for losing 8 wickets in the stipulated 5 overs. And now the target for Team SDM Mavericks is 43. 43 Team SDM Mavericks have to score with a required run rate of exactly 8.60 runs per over in the stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them। और देखते हैं 43 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम एसडीएम मैवरिक्स के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। 43 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स, और उनकी पारी की शुरुआत होगी कुछ मिनट बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त, प्रतिभाशाली राज्य भाषा कन्नड़ के वीक्षक विवरणकार शाफी परपुंजा के साथ, जब टीम एसडीएम मैवरिक्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯು ತರ ತುರುಳಿಯಾದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ
ಶನಿತ್, ವೈಶಾಖ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಜೀಮ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1:43 ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಹಾದು ಹೋದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7-3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. 5th ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಓಟಗಳು. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಅಜೀಮ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಜೀಮ್ ಮೊದಲೇ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸ್ತಾ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿ ಲಭಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತ ಹೊಡೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 43 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡಗಳು ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಅಜೀಮ್. ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭ ಇದು ಎಸೆಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ದಾಂಡಿಗನ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿತೀಶ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿ. ಆದರೆ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನಿತೀಶ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿತೀಶ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ
11 ಆನ್ ದಿ ಬೋಟ್. 32 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ನಿತೀಶ್. ಎಸೆದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಎಸೆತ. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಪವರ್ಫುಲಿ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಅಜೀಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 6 ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 15. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿತೀಶ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಈ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಅಜೀಮ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ he is playing here. Second sixer from the bat of Azim. 1 boundary. Add to that 2 sixes, which means the scorecard suddenly jumps on to 21 without a loss of any wicket. What a start this is for Team SDM Mavericks. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಜೀಮ್ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡು ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತೆ ಇದು. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ದೀಕ್ಷಿತ್ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳಿದೆ, 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಹಾದು ಹೋದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳಿದೆ, 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 15 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ವಿಫಲತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ 2 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಂಪ್ರವೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ದಾಂಡಿಗ ಶಾಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್, ಸೊಗಸಾದ ಲೆಂತ್ ನ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 2.5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳಿದೆ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 18 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ
ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಪ್ರಸಾದ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. Absolutely fantastic over as far as the situation of the game is concerned. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 overs 12 runs conceded and he got 1 big wicket. 2 ಓವರ್ 12 ರನ್, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. The penultimate over of the match. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಜೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಖಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡು 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. What a delivery! What a delivery! A loose full toss, but that full toss gets rid of the big man. Nikit is the man who got the big wicket of Azim. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಧೀರಜ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ನಿಖಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಬಲ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Azim walks back to the pavilion. 2 sixes and a boundary in his innings. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಫೀಲ್ಡರ್ collects the catch. What a moment in the game. The captain walks back to the pavilion with a golden duck. What an over this is from Nikit. The game changing over as far as the situation of the game is concerned. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಓವರ್ ನಿಖಿತ್ ಅವರ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಖಿತ್. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, 2 ಪ್ರಬಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಖಿತ್. ನಬೀಲ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಕಿ ಎಸ್ತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಡ್ರೀಮ್ ಓವರ್.
ಕನಸಿನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಂಬಲ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಖಿತ್ ಅವರ ಓವರಿನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಖಿತ್. 6 balls remaining and 14 runs required for the victory. 6 ಚೆಂಡು 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಿಕಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 balls remaining and 14 runs required for the victory. ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸಂತ ಖ್ಯಾತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಕಿಟ್ಸ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 1 ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಆ 1 ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲರಿ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ರಿಕಿಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಆದರೆ ವೈಡ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 6 balls remaining, 13 runs required for the victory. 6 balls remaining, 13 runs required for the victory. Here comes the first ball. Oh, he hits it. But the fielder saves the ball. What a fielding, what a save this is. Absolutely fantastic save from the fielder down at deep mid wicket. Dikshit is the fielder at deep mid wicket. What a save this is. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಐದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು ರಿಕಿತ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ನಬೀಲನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 balls remaining, 8 runs required for the victory. What a game of cricket we are witnessing here. One big hit badly required here for team SDM Mavericks. 2 good balls, definitely 2 good balls required here for team Avishkar. ಮೂರು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಸಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಕಿಟ್ಸ್.
ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ನಬೀಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Prasad back on strike. Is this the moment in the game? Prasad back on strike. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಹಾರಯುತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ್. ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅತಿ ಮನೋಹರವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಕಿತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 to go, 7 to get. Here comes the penultimate ball of the match. Prasad fails. No connection between the bat and the ball. What an over this is from Ricketts. Absolutely fantastic bowling under pressure. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 will end the match in a tie. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 to go, 7 to get. The last ball of the game, number 6. Here comes the ball and it's a wide. Oh my goodness. Oh my goodness. Is there a twist in the tail? 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ, 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 to go, 6 to get. Rickett with the ball, Prasad with the bat. Here comes the last ball of the game. Prasad hits it. But the fielder becomes a hero here. I will tell you, Dixit is the hero of the match, number 6. What an end to the game, number 6. Prasad's. Unfortunately, Prasad's couldn't finish the game. What a save, what a fielding. Absolutely fantastic fielding this from Dixit. 2-6 saves had made the game in favor of Team Avishkar. What a fielding this is. Quite often we say the catchers win matches, but this is not a catch. This is a save that has won the game for Team Avishkar. Dixit has been the hero of this innings. What a fielding effort this is. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
the fielding department once again shown that if you have got a very good fielder in your side, you can win the match. And Dikshit is the one who really saving two certain sixes for his team and takes the match away from the opposition team. SDM Mavericks, unfortunately, they lost the match because of two wonderful saves by Dikshit, and especially the last one when it's a 6 required for the victory. The way that he saved that 6 is unbelievable. It's absolutely fantastic save, and they won the match in a thriller. So now we are coming to the match number 7. Team Real Fighters, the defending champion, versus Team Samrat. And here is the first ball. Right over the gate starts with a well pitched up delivery, which is outside the line of off stamp. Extra bounce as well with the pace. The bowler Gitesh, who's bowled a fantastic first delivery, and this is going to be a last match of the day number 1 of this prestigious Fighters Trophy, which is proudly organized by Team Real Fighters. And tomorrow we're going to start the first match exactly at 9 o'clock. This time bowler's back dry, not quite getting hold of that proper chance of run out. Direct hit might be the curtain in the innings of the batter Neville. Neville certainly is a very dangerous batsman. Not only the Neville, but 2 youngs, which is going to start the innings for Team Real Fighters, Neville as well as Noel. And certainly it's a very good opening pass, successful opening pass for Team Real Fighters. Once again, they wanted to get the good start in this second match of their league. Right arm over the wicket. Balls. Oh, lovely delivery. That was a certain leg before wicket, and unfortunately there is no leg before wicket, so that batsman survived from that delivery. So Gitesh is bowled a perfect one in the occasion. The line, which is so good, almost a Yorker line delivery, right on the block hold, and the batsman shuffled across the line of the delivery, but couldn't manage to get that one from the bat. So 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Gitesh bowling to Neville. This time he lofted, swings that one, swings it hard, but I think the fielder is not that. He's placed that one quite beautifully. Down to wideish long on, between wideish long on and mid wicket. And once again, it's not that much of short enough, but the batsman just the way that he's going back, using the depthness of the crease very well, and just going back and pulls that one handsomely down to deep wideish long on for a 6. This is a Neville for you. You can make any good deliveries into the scoring deliveries. The way that they implementing the technique of hitting the ball, it's amazing. Gitesh balls. Switch it is comes into play. Switch it is comes into play, but this time fielder did a very good job. Quickly moving towards his left, while the batsman going for the reverse stroke. He's changing his position, moving to his right, and moving to his left hand, fields the ball very well. And the batsman has got plenty of time to complete the single. With that single, score moves on to 9 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Gitesh once again back to his bowling mark. Bowling away from us. Past the umpire. Right arm over the wicket delivers. Full toss, going for the full shot. Not quite able to take the advantage of that full toss. It's not that much of a high full toss. It's a low full toss. And the batsman now fails to make any impact in that full toss. And over number first, which is completed by Gitesh. So first over completed, 9 came from that over. Slight a bit of good comeback here by the bowler. In fact, after that 1-6 which is came in this over, but still he managed to pull the things back by conceding another 3 runs in that over. Altogether 9 came from that over, and the Real Fighters they got a very good start in the first over. What a fantastic game of cricket is in progress. Almost we are going to finish the day number 1 after this match. This is the last match of the day number 1. All the matches which is played in the day number 1 is a very, very successful one, and there is a discipline. Everything we can witness in this day number 1, and thanks to each and every participated teams, they are cooperated with the organizers as well as the officials. Tomorrow will be the decider day of cricket, the final day of this cricket tournament.
And wait and see which team will going to become the champions. And now here is a defending champion, Real Fighters. They're playing their second match of their league after they got a victory in the first match. They wanted to get the second victory in this league stage matches. Now bowler is introduced from the far end, Abhishek. This time, what a switch it! Unbelievable struck. So easy, isn't it? It doesn't look like the right-handed batsman hitting the ball. It looks like the left-hand batsman hitting the ball down to deep square leg region. Unbelievable. This is a Neville for you, isn't it? The way that he's got a technique of hitting the ball, and suddenly is known to be a 360-degree player. Absolutely unbelievable strokes came from the bat of Neville. Akhilesh from the far end, around the wicket. Neville wanted to repeat this one. This time the bowler is good enough to see the intention of the batter. This time some size of appeal coming from a wicketkeeper behind the stump for the stump out. And Neville almost after he wanted to hit the ball by playing a switch it, missed it completely. Wicketkeeper gathers the ball, but after some time, and the wicketkeeper tried to make a stump out, but umpire says batsman safe inside the trees. So no damage done. The team Trishul also they're playing their second match. They won their first match against team Thunderwolves. So both the winning teams are playing each other, and this is a battle between the two winners, two very good teams. Akhilesh bows, going for the big swing of the bat. This time it didn't got enough for bat onto that, but good enough for him to get the single down to deep square leg region. This is a delivery which is not that much of short enough for Neville to pull the ball. Slight bit of ball is keeping low, and that's why he couldn't manage to get that one from the middle of the bat. But even he gets a single, that's very important. Strikes are rotated. Scoreboard numbers on to 16 for the without loss of any wicket. Once again, the very good start given by the opening batters of Real Fighters, and Neville and Noel. Noel after a long time is back on strike. Akhilesh balls shuffled across the line of the delivery. Once again, he wanted to swing that one. Very good thinking by Akhilesh. You know exactly the batsman looking for the improvising cricketing stroke after moving towards his off stump, shuffled across the line of the delivery, and it is just following the batsman. Just very important for the bowler. Whenever the batsman going for the premeditated improvising cricketing stroke, I think the bowler need to see the movement of the batsman before releasing the ball. And that's what the bowler is did in Akhilesh. Seeing the ball, batsman moving towards off stump, he's just following the batsman, bowling around his legs and survive from the big shots. This time pulls that one, not quite getting hold of that one properly, but quite enough to get past that short mid-wicket fielder, and the ball which is landed in a no-man area, and before the fielder from deep long on to run across his right to field the ball, ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard numbers on to 17 on the board. The over number second is in progress. Akhilesh, the last time in this over. Right arm over the wicket bounce. This time going for the big shot. Ball is in there. What a catch. What a fantastic catch taken there by the short fine leg fielder. Absolutely stunner. Taken there by SK down at short fine leg. So never looks like it's going to be so easy. Just I want to see it in the replay. The way that the short fine leg fielder and the batsman going for the full shot. Not quite getting control over the full shot. And have a look at the effort from the fielder. Outstanding, isn't it? Just going to his left and diving to his front. Before the ball going to land it, his two hands coming right behind the ball, under the ball, and it taken absolutely a stunner. The huge wicket is back into pavilion. The wicket of Neville is back into pavilion. This is the wicket what the team, opposition team desperately wanted to get. Team Trishul. Now they are looking in upper hand after dismissed the danger man Neville back into pavilion.
The very good overs. In fact, even he conceded 6 runs. One huge 6 which came from the bat of Neville. But Akhilesh, slight a bit of comeback from him. After that, he bowled very good line and length. And in the last delivery, he picked up a wicket. And it's thanks to the SK, who has taken a fantastic catch down at short fine leg region. 17. 2 overs completed. Run rate is exactly 8.5 runs per over. Gitesh to continue. Bowling his last and second over of his quota. Third over of the innings of Real Fighters. This time again, Novel drives the ball down to deep long on region. Not quite intended, isn't it? He wanted to drive the ball towards offside. Because of that slower one from Gitesh, the batsman had to play that one down to deep long on for a single. So with that single, Skoba moves on to 18 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Neville is back into pavilion. Gitesh with a fantastic, very smooth bowling action. Beautifully bowled, perfect one, absolutely perfect one. So this is the advantage, isn't it? Whenever the bowler is releasing the ball in the last moment, just to have a look at the releasing point of the bowler, he's just observing the batsman till the last moment, and this is going to help the bowler to where to pitch the ball and where to get the good line, just seeing the movement of the batsman. And this is a plus point when you're having a slight bit of extra jump when you before delivering the ball. Have a look at that one. That is switch it in the sense the opportunity for the fielder in the backward point region. One more wicket is back into pavilion. Vikyat departs. Manjunath, the feeder down at backward point region, completes a catch. So now I think team Trishul are looking so good. The scoreboard is still remains on 18 for the loss of 2 wickets. This is turning out to be a very good over from Gitesh. So far in the 3 deliveries, considered only single run and he picked a wicket. So this kind of performance which is badly required when you're playing against a team like Real Fighters, the defending champion. They came into this tournament as one of the favorite team to qualify for the finals. And even team Trishul, as far as their performance so far in this day number 1, there looks like they're never going to give up this match, so easily for the opposition. The new batter came into middle. This time catch it is a call, but no one dared to catch the ball because ball landed very safely the no-man area. And the fantastic visa bowling performance which continues here from Gitesh. Prerit just examining the field set. There is a deep square like mid-wicket long on. The long off and deep cow point is the fielders outside the circle. Backward point, short cow point, short fire leg, and short mid-wicket, the fielder inside the ring. This time he locked it. So easy, isn't it? Absolutely unbelievable and effortlessly played. Absolutely effortless cricketing stroke, isn't it? Just a stand and delivered. Doesn't look like that. Looks like it's going to be a cricketing stroke. This is like that forearm tennis stroke, isn't it? Off the back foot, slide a bit of extra bounce, but he's negotiated very well to get that one right from the middle of the bat, and it's quite enough for him to get the distance. Scoreboard is now moves on to 24. The 24, which is the total score now. The right time, the right blow coming from the bat of Prerit. So all the efforts are gone in vain in one ball. The Gitesh so far it looks so good in this over, but one very good cricketing stroke is quite enough for Real Fighters to back in the game. Whoa, what a shot! What a shot! This has been unbelievable! Absolutely fantastic cricketing stroke, isn't it? You can't blame a bowler for that because I think the batsman, the way that he shuffled across the line of the delivery, it's unbelievable. Absolutely terrific shot. 2 sixes in the last 2 deliveries. The Real Fighters, they're just justifying the name why they got a Fighters.
Even though they lost 2 wickets, the wicket of Neville and Noel, the wicket of Neville and Vikyat, but still they are in a good position. Total score is 30 on the board for the loss of 2 wickets. This is quite enough for them to back in the game. The 10 runs per over, absolutely good one. The way that played at cricketing stock, definitely the cricket lovers, those who are watching live telecast of this cricket tournament through V4 24/7 YouTube channel, they wanted to see that cricketing stroke again and again, because that's that kind of cricketing stroke we can see in the international cricket. Maybe they inspired from that kind of cricketing stroke, and especially the Surya Kumar Yadav is a 360 degree player. He loves to play such kind of cricketing strokes. Shuffled across the line of the territory before the bowler bowling that delivers the ball. Premeditated improvisation. And he played that one right from the middle of the bat. So 30 is a good score on the board now for the Real Fighters. This time the delivery number first of the over number 4. Noel doesn't looks like that he's that much of comfortable in that particular cricketing stroke. The second time he's tried to play that switch it, but missed it completely from the bat. Now save from the far end. Long run up. Right arm over the wicket off the back foot. Punch that one down to deep long off region for a single. So with that single score moves on to 31 now. 31 for the loss of 2 wickets. Real Fighters playing against Team Trishul. Team Trishul, the team which is got a victory against the Team Thunderbolts. And Team Fighters, they defeated Real Fighters defeated MPC. This time top edge, but again very lucky. And Prerit is very lucky that there is a ball which is landed safely. There is a no man area. The mid wicket and wicket keeper tried to take the catch, but unfortunately the ball is landed between that 2 fielders. Just a single there. 32. Now she's so far succeeded to stop this batter from the big shots. 4 times in this over. Lost his run up, rhythm of his run up, and is back to his body mark. Very different bowling action what the bowler is having now here. It's a slight bit of confusion bowling action, because the way that he is holding his ball and the time of releasing the ball is quite a different one. That will be maybe the confusion for the batsman, when and where the bowler will go in to release the ball, because he's taking the ball from the left hand and transferring the ball into right hand, then he's bowling to just like that. Absolutely fantastic. And one more dotted delivery. So far it's a very good over, comeback over for the bowling team. Trishul needed such kind of bowling performance in the 4th over after that expensive over, the previous over. Now here looking so good so far, but job which is not yet over, because one delivery left in this over, but one delivery is quite enough for the team Real Fighters to back in the game if you're able to get one big shots. This time again nicely bowled, absolutely fantastic over, very good over indeed there from Naushir. The quiet over, just the 3 came from that over. After completion of over number 4, Real Fighters 33 for the loss of 3 wickets. The first better over, bowled by Naushir, just the 3 runs. Now last over remaining in the innings of Real Fighters. The team Trishul now slowly they're dreaming that if they may manage to bowl one good over here, they can win the match, because any score less than 40, I think the favorite team is a chasing team. But you cannot underestimate Real Fighters, their bowling department. Just like what they got a very good strong batting department, they got a very good bowling department as well. But I think the bowlers so far did a great job for team Trishul. And the last over remaining, last opportunity for the acceleration for Real Fighters. Through balls, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. The Real Fighters, why they got the name Fighters, even though the last over, which is a very economical one, but they know exactly 1 over remaining
That this is quite enough for them to get back into the game. The first ball is a very intention is very clear here from the batter. Noel so far is very silent, but when it's the time is required some big shot, he just got the right stroke and he got a 6. Oh, what's that one? This is I think all the time in the world to pick that slow bouncer, isn't it? It's not a kind of bouncer we need to bowl in the last over. And whenever bowling against a batsman like Noel, this is very difficult for any bowler to survive from that kind of delivery, isn't it? This is all the time in the world. Just have a look at it when I replay. The way that bowler is bowling that slow bouncer, and Noel just waiting for that slow bouncer and pulls that one very handsomely down to deep square leg for a huge 6, second sixer of this over. And a sudden change in the game, and even the change in the acceleration of a run rate as well in this last over. 2 sixes in 2 deliveries. This time high, and will going to be handsome. No, it doesn't. The fielder underneath it down at long off region. Noel wanted to get another 6. He wanted to get the hat-trick 6, but this time bowler is good enough to get the ball into that almost in the above the body level. After that ball is pitched extra bounce, which is defeating the batsman's timing what he wanted to get. And the fielder is underneath it, and the good innings of Noel, which is comes to an end. He scored 17 runs before he back into the game, but all that big runs came in the last over, isn't it? That's 2 deliveries, which is good enough for real fighters to back in the game, because total score now already is 45 on the board. Still they have to play another 3 deliveries. Dhruva bowls the new batsman. This is a good enough. You can bowl the slow bouncer for the fresh leg, but not for the batsman like the settled batsman like Noel. This is good enough for the new batsman when coming to the middle. I think it's a good weapon to use when you're bowling the last over. Absolutely very good short pitch, slow short pitch delivered outside the line of off stump. 2 balls remaining. Dhruva balls beautifully bowled. Perfect one. Absolutely perfect line. 2 sixes in 2 deliveries in the beginning. Then 1 wicket and 2 deliveries. This is a really I love to see the bowlers come back. It's not so easy whenever the batsman hitting you back-to-back 2 sixes. Your level of confidence is not that much of high enough, but a good bowler can bowl some good deliveries. If you wanted to back in the game, this time it's going to be opportunity for the fielder. Oh my goodness! The mid-wicket fielder has got opportunity to take the catch, but a slight bit of misjudgment by the fielder, so that the batsman completed a couple of runs. That's it. Over number 5 completed. Run out taken place. While they wanted to get a 3rd run, but he's finding his finding short of his crease. A couple of runs to finish the innings, and at last they completed their 5 overs quota by scoring exactly 47 runs and set a target of 48 runs to win this match. And I think it's might be the good enough for real fighters to depend the total, but I think Team Trishul have to work hard, especially in the batting department, because when they're going to chase this 48 runs, might be not much of a huge total, but in the evening, I think there is not that much of no wind at all in the cricket ground. I think a lot of extra effort which is required from the batters of Team Trishul to win this match, and we'll see how well these 2 winning teams will going to continue their winning track in this particular and the last match of the day number 1, and we will going to finish the day number 1 with the victory. And for that I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone final time in today, and it's over to Mr. Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 48 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है टीम त्रिशूल के लिए, टीम रियल फाइटर्स ने। और टीम रियल फाइटर्स जो कि पिछले साल के एडिशन की विजेता टीम, जो कि यहाँ पर उनके सामने बनाने हैं 48 रन त्रिशूल को। और देखना यह है कि उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अखिलेश और साजन आरंभी का बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नेविल, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त नेविल तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। और नेविल फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। और पहली गेंद लेकर नेविल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, जबकि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार अखिलेश। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट नेविल पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंस, नॉन स्ट्राइकर के बल्ले पर इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। रक्षात्मक तरीके से गेंद को उस वक्त पुश किया था, रन के लिए नहीं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने दिलचस्पी दिखाई रन लेने की, और गेंद सीधे पहुंची सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में, और सिली मिड ऑफ फील्डर ने स्टंप्सों पर निशाना दागा गेंद को फील्ड करने के बाद, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी, बिना किसी गेंद का सामना किए हुए साजन पवेलियन वापस लौटते हुए पारी की पहली गेंद पर टीम त्रिशूल को एक झटका यहां पर लग चुका है साजन के रूप में। 0 पर पहला विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ गीतेश इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अपील फॉर कॉट बिहाइंड दिस टाइम। और यहां पर अपील जारी है। अगर लेग बिफोर विकेट इस टूर्नामेंट में होता तो निस्संदेह यहां पर आउट कहलाते थे बल्लेबाज। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि गेंद पैर से टकराने से पहले बल्ले पर टकराई है या नहीं। दोनों अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, और आखिरकार अंपायर ने नॉट आउट उन्हें घोषित किया। तो यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए, लेकिन बेहतरीन गेंद इस गेंद पर गेंदबाज ने फेंकी थी। और फिर से एक बार नविल अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त अखिलेश, और लंबे रनअप के जरिए अखिलेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद एक बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को उछालना चाहता, गेंद तक पहुंचना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद, और स्कोर यहां पर रुक चुका है कुल मिलाकर 0 पर। 3 बेहतर गेंदें नेविल इस ओवर में फेंक चुके हैं, और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, लंबे रनअप के जरिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए, ये गेंद बेहतर गेंद, एक बार फिर से, इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए, और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता लंगोन के ऊपर से, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, और आखिरकार गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस ओवर में गेंदबाज नेविल, और अपनी ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त बल्लेबाज अखिलेश तैयार। नेविल, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद रन के लिए दौड़ पर निशाना चूक चुका है, लेकिन निशाना चूकने की वजह से बल्लेबाज का विकेट गिरते गिरते बच चुका है। और जोखिम भरा रन था, हल्के से गेंद को पुश किया था, टैप किया था वहां पर, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गीतेश की पारी भी यहाँ पर समाप्त हो सकती थी बिना किसी गेंद का सामना किए हुए सजन की तरह, लेकिन यहाँ पर निशाना स्टंप्सों पर नहीं टकराया, और बल्लेबाज 1 रन के साथ सुरक्षित अपना छोड़ बदल चुके हैं। 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है टीम त्रिशूल के लिए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी राइट ऑन द ब्लॉक होल, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को इस वक्त ढकेला था, गेंद को रोका था, गेंद को ब्लॉक किया था, और तेजी के साथ 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके दोनों बल्लेबाज। तो एक बेहतरीन ओवर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड फ्रॉम
the bowler Neville. He conceded just 2 runs in this over. और पहले ओवर में जो बेहतर गेंदबाजी की तलाश थी वो बेहतर गेंदबाजी दे चुके हैं, यहाँ पर कर चुके हैं गेंदबाज नेविल। बेहतरीन ओवर। और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नंबर 19 जर्सी पहने हुए गेंदबाज नोयल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार। नंबर 96 की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज, 96 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज गितेश। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। सिर्फ 4 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात। इस श्रृंखला के नियमानुसार पावर प्ले के बाद और ओवर की पहली गेंद लेकर नोयल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद को उछालना चाहता इस वक्त, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को उछालना चाहते थे लंगोन सीमा रेखा के ऊपर से, लेकिन आखिरकार गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह जहाँ तक सवाल है 48 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त टीम त्रिशूल के बल्लेबाजों को सख्त जरूरत है अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है। तो फुल टॉस नहीं, गेंद लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता गेंद वाइड स्लॉन्ग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होने के बाद दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और नोयल एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस बार सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश। और ये जानते हुए कि बल्लेबाज अखिलेश बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए डीप बैकवर्ड थर्ड पैड पर जो फील्डर तैनात थे सीमा रेखा के पास उन्हें इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है गली क्षेत्र पर, और मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थोड़ा सा सीधा और मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वायर बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद बेटर वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद को इस वक्त रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहा क्योंकि और गेंद बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की, बल्ले का बाहरी सिरा या किनारा यहाँ पर नहीं टकराया और स्कोर रुक चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज नोयल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। गेंद जाती हुई पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन मिलेगा। निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका इस वक्त और अपने सर पर हाथ धरे हुए वहां पर बढ़ गए पिच के पास फील्डर की निशाना उनका चूक चुका है और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। नोयल इस बीच तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रनअप के जरिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बीच गितेश सामना करते हुए अपनी गेंदबाजी में अपने रनअप में कुछ हद तक बाधा एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला लंगोल पर। गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck this time. Came from the bat of the right-handed batsman Gitesh. ऐसा कहना पड़ेगा just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over wideish long on fence for a huge 6. 10 without loss, 10 for the loss of 1 wicket in fact. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त गीतेश के बल्ले से लगता हुआ और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त नोयल तैयार था। इन हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गीतेश के लिए यह गेंद इस बार टॉप एज मौका हो सकता है। एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे मिस जजमेंट वहां पर कैच सर्टेनली कैच वहां पर था एक्स्ट्रा कवर फील्डर के लिए, लेकिन खामखा यहाँ पर गेंदबाज दौड़ा है और आखिरकार दोनों के बीच में मिस जजमेंट हुआ और आखिरकार गेंद वहां पर गिरते हुए। और अगर गेंदबाज वहां पर नहीं आए होते तो निस्संदेह ये कैच को आसानी के साथ लपक सकते थे एक्स्ट्रा कवर फील्डर। तो मौका उनके हाथ से जा चुका है और जीवदान के साथ 1 रन प्राप्त कर चुके हैं इस बीच बल्लेबाज गीतेश। 11 रन बन चुके हैं
एक विकेट के नुकसान पर. It's 11 for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 has been completed. 2 overs completed. 11 runs on the board. 1 wicket lost. Still the batsmen of team Trishul searching for the right track. 3 ओवर का खेल बाकी और 3 ओवर में रन्स अब बनाने हैं 37 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 11.33 runs per over. 12.33 runs per over in fact. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नेविल जिन्होंने अपना बेहतरीन पहला ओवर फेंका था इस बीच अपने दूसरे ओवर को लेकर तैयार और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ टीम त्रिशूल की पारी में और टीम के अन्य खिलाड़ी से इस वक्त बातचीत करते हुए गेंदबाज नेविल और बातचीत इस वक्त जारी है फील्डिंग के जमावट के बारे में और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. 37 रन और बनाने हैं बचे हुए 18 गेंदों में. 37 runs more they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. पहली गेंद नेविल. Oh, terrific, absolutely fantastic one. This is a fantastic yokel delivery from the bowler. गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाती हुई बड़ी मुश्किल के साथ इस गेंद को वहीं पर दबा दिया और बाल इस गेंद पर बचते हुए बल्लेबाज गीतेश. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज नेविल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद नेविल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव किया. बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी वंस अगेन और बड़ी मुश्किल के साथ जगह बनाते हुए गेंद को इस वक्त खेला लगोन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. 2 बेहतर यॉर्कर लेंथ गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज नेविल. इस ओवर में पिछले ओवर में भी 1 या 2 गेंद उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर लेंथ फेंकी थी और यहां पर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार उछाला गेंद मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से निकलती हुई वाइड लॉन्ग ऑन पर. लेकिन परेशानी की ज्यादा बात नहीं है क्योंकि सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला इस स्ट्रोक पर और इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर. 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर नेविल. एक बेहतरीन स्पेल उनका प्रगति पर. फिर से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश. ये गेंद उछाला इस वक्त काफी ऊंचा लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस बार कैच को लपकने में सफल हो चुके हैं. गेंद को उछाला था जरूर अखिलेश ने लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं. टॉप एज पर गेंद टकराई. काफी देर तक हवा में रही थी. काफी ऊंची उछली थी और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे एक बेहतरीन जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका और इस बेहतरीन जजमेंट कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है अखिलेश का. अब ऐसा कहना पड़ेगा नीलाकाश तले कुछ ज्यादा बादल तो इस वक्त दिखाई नहीं देते हुए लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त टीम त्रिशूल के बल्लेबाजों पर साफ मंडराते हुए. सिर्फ 14 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ 2 विकेट गिर चुके हैं और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में नौशीर का आगमन यहाँ पर हो चुका है और देखना यह है कि नौशीर नेविल की गेंदों का किस तरह सामना करते हैं. और इस बीच गेंदबाज नेविल तैयार और बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के निर्गमन के बाद इस वक्त नौशीर का आगमन हो चुका है. सामना करने के लिए तैयार नेविल की गेंदों का. यह गेंद वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी. अनप्लेएबल वन. Absolutely in swinging yorker pitching right on the block hole and stuck to his middle off stump. That was a masterclass bowling performance. This is an absolutely masterclass delivery from the bowler. और गेंद देखिए हवे में डोलती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर्स के रूप में आई और ब्लॉक होल पर टकराई और ऐसा कहना पड़ेगा अनप्लेएबल डिलीवरी.
गेंद को खेलने का कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, और इस बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके नेविल। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए, और टीम त्रिशूल की पारी यहाँ पर डगमगाती हुई नजर आती हुई। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त आ चुके हैं संतोष, सामना करने के लिए तैयार नेविल की गेंदों का। दाहिने हाथों पर द विकेट, नेविल गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से बेहतर गेंद थी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अ फैंटास्टिक स्पेल केम टू एन एंड फ्रॉम द बॉलर नेविल। दिस इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्पेल। 2 overs, no maiden. He conceded just 5 runs and captured 2 wickets. And और 5 ओवर के फॉर्मेट में अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 5 रन और 2 विकेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्पेल केम टू एन फ्रॉम द बॉलर नेविल। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के इस वक्त टीम त्रिशूल को इस मैच में वापस ला सकते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में। 34 runs now they have to score for victory in remaining 12 balls. That means in remaining 2 overs 17 runs per over they have to score for victory. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, चूंकि बेहतर गेंदबाजी एक बार फिर से रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हर गेंद के बाद दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और 11 गेंदें बाकी है इस वक्त, रन से चाहिए 11 गेंदों में 34। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार था, यहाँ तो ऊपर विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सिर्फ एकमात्र आत्मविश्वास पर स्ट्रोक अब तक लग चुका है उनकी पारी में, और वो स्ट्रोक छक्के के रूप में परिवर्तित हुआ था जो गीतेश ने लगाया था। उसके अलावा देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त दिया है गेंदबाजों ने। इस बार अपील थ्रो, ओवर थ्रो, और 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा। तो अपील इस वक्त की गई थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन यहां पर मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। और नेविल की बेहतरीन गेंदबाजी से उत्तेजित होकर अब विख्यात भी एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए दाहिने हाथों पर विकेट उछाला, मौका हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए। इस बार गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की, पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को इस वक्त वो लपकने में सफल, और इसी के साथ टीम त्रिशूल का एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Fighters Trophy 2023, which proudly organized by Team Real Fighters. और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, और इस श्रृंखला का 7वां मैच, 7th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इस वक्त प्रगति पर। शाम का वक्त, धूप का प्रकोप जरूर कम हो चुका है लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है, और इससे पहले अगली गेंद इलेक्शन से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन मिलेगा। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। सूरज मैदान के दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है डूबने के लिए, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, विकेट कीपर ढूंढते रहे कि गेंद कहां पर गई है, लेकिन गेंद वहीं पर गिर चुकी थी। आखिरकार इस गेंद पर वाइड का इशारा, इस गेंद पर रन बल्लेबाज को तो नहीं मिला लेकिन टीम को जरूर मिला 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। विख्यात फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर उछाला, इस वक्त एक और विकेट हो सकता है। लॉन्ग ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन नहीं, गेंद को लपकने में असफल, गेंद को रोकने में भी असफल, और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए। हालांकि स्ट्रोक्स काफी ऊंचा लगाया था लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और इस छक्के के साथ बल्लेबाज धनुष अपनी टीम की उम्मीदों को कुछ हद तक बरकरार रख चुके हैं। यह गेंद पटकी विकेट, कट करना चाहा, तेज तरीके की विकेट कीपिंग, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर, बैकफुट, जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट।
4 overs completed, and 24 more runs now they have to score in remaining only 6 deliveries. 6 गेंदे 24 रन, 24 गेंदों पर 24 रन बन चुके हैं और 24 रन और बनाने हैं, जबकि गेंदे बाकी हैं सिर्फ 6। और अब ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी भरी बल्लेबाजी ही अब टीम त्रिशूल को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। फिलहाल इस मैच का अंतिम ओवर, शायद आज का अंतिम ओवर भी हो सकता है, शुरू होता हुआ। और गेंदबाज मनीष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और पिछले मैच में मनीष ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए उनके पारी के अंतिम ओवर में। और यहाँ पर देखने ये है कि पिछले मैच के सफल गेंदबाजी के सिलसिले को इस मैच में भी वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से, और लगभग शाम के 6 बजते हुए यहाँ पर दाहिने हाथों पर द विकेट। पहली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त स्कूप कर दिया है, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ पर, और वहां पर गेंद को रोकने में सफल बड़ी मुश्किल के साथ, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, और कुछ दौड़ लगाने के बाद गेंद को रोका गया बड़ी मुश्किल के साथ सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का। 27 नाउ, 21 to get in remaining 5 deliveries। और मनीष एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मनीष, ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक वन, परफेक्ट इन स्विंगिंग डिलीवरी, और गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेट कीपर ने विकेट जरूर उड़ा है, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ, 4 deliveries left, 20 runs required, almost a last chance now in front of the batsmen of team Trishul in this remaining last 4 deliveries। 20 रन चाहिए बचे हुए 4 गेंदों में, और अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। मनीष दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, लेकिन इस गेंद को नॉट क्वाइट मिडल गेट, लेकिन वहां पर प्रयत्न करने के बावजूद गेंद को लपक नहीं पाए। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम अवकाश, 3 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 deliveries, 18 to get from last 3 balls। और गेंदबाज इस वक्त मनीष गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला फ्लैटर वर्जन पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है बेहतरीन तरीके से। तो बेहतरीन कैच इस वक्त लपकने में सफल, शायद ये गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए, हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, किस तरीके से कैच को लपका था, कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे, यहाँ पर बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त लपक लिया सीमा रेखा के अंदर। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द फील्डर एट लॉन्ग ऑफ। और इसी के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम त्रिशूल की विजय की संभावनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है, अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज मनीष अगर कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। 18 रन चाहिए, सिर्फ 2 गेंदें बाकी, 18 to get from remaining 2 deliveries। और इस बीच गेंदबाज मनीष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, क्योंकि गेंद उनके शरीर पर टकराए, डॉट गेंद, और अब असंभव लक्ष्य, 18 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। और क्रिकेट इतिहास के किसी भी किताब में यह दर्ज नहीं है कि एक गेंद पर 18 रन बने हो। तो देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद पर बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं। मनीष इस बार उछाला लगोन पर, और गेंद इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स के छत पर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए, लेकिन यह छक्का
पर्याप्त नहीं टीम त्रिशूल को विजय दिलाने के लिए. They lost the match by 11 runs. So 11 runs victory for team Real Fighters against team Trishul, and with that 11 runs victory they back the complete point. तो आज के सारे मैचेस इस वक्त समाप्त हो चुके. कल सुबह पहला मैच खेला जाएगा टीम तुलुनाडु टाइगर्स और टीम सम्राट के बीच में, और वो मैच कल सुबह सुबह 9 बजे शुरू होगा. और कल सुबह के पहले मैच के दोनों टीमों के सदस्यों से कृपया मैं निवेदन करता हूं कि सुबह